फिर भी एक तरीके से एक ऐसा सॉल्यूशन निकले जिसमें इंडस्ट्री स्ट्रेंथन हो सके, ये सब विचार करके बहुत ही सोच समझ के इतना, मेरे ख्याल से जो सितंबर के रिफॉर्म्स की बात जो आप कर रहे हैं, that's one of those very well thought out, really going deep into the problem and bringing up a solution where government's revenue is not compromised at all. With that philosophy, those reforms were taken out. In that, one of the options which was given to the industry was that the interest which you have to pay for the 4 years, that interest can be paid either in you pay it or you give your shares in lieu of that. So that's the thought process with which that option was given. 3 companies have exercised that option, sir. We are examining the letters that they have given. Thank you. Sri Sujit Kumar ji. Sir, I am well aware of the various initiatives taken by the government to spread telecom revolution in remote and rural areas of India. Sir, the BharatNet project would be a good example, which is implemented to provide broadband connectivity to all the panchayats. But sir, even today, a quarter of the Gram Panchayats in the KBK districts of Odisha, which is largely tribal dominated and Naxal infested, are unconnected. They do not have telecom connectivity despite repeated reminders and question address in this house. So my request and question to Honourable Minister is, will he come out with a special scheme to expedite telecom connectivity in the KBK districts of Odisha? Thank you. 7,000 new telecom sites in the country, especially in areas which are not connected. And I am so glad that Odisha, because of various historical reasons and because of some of the areas which are very difficult, especially the forested areas, KBK areas, which Honourable Member has referred to, 3,933 sites were sanctioned for Odisha. New telecom sites, I request Honourable Member, especially in areas which are not connected, so that the sites can be easily given, can be quickly given, we can start raising the tower. And BharatNet, sir, in Odisha, the BharatNet project is implemented by the state government. I'll request the Honourable Member once again, please work through the state government so that the implementation can improve. Implementation is not at all satisfactory. Thank you. Question number 38, Maniya Kanak Mehla Ravindra Kumar ji. Number 38. Maniya Mantri ji. Railway, it's related to railway. So the answer is 38, sir. Answer is laid on the table of the House. First supplementary. Sir, as per item 18 of the schedule 13. Sorry, question hour is over. One more, sir. Question hour is over. Supplementary. Please, no. Sorry. Statements of the Public Accounts Committee, Sri Bhuneswar Kalita ji. Please lay. Sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name. The reports of the Public Accounts Committee 2021-22, serial number 1 to 19. Thank you, sir. Thank you. Manya Prasanna Acharya ji, discussion on the motion of thanks on President's address. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me the occasion to speak out my mind about the address of the Honorable President of India to the joint session of both the House in the beginning of this budget session. Sir, it is customary that the Honorable President of India will address both the Houses at the beginning of the session. And it is also very clear that whatever the President speaks on this occasion, it is only a speech prepared by the government and approved by the cabinet of this country, sir. But, sir, I must thank the President because at the beginning of his speech, one very important thing the Honorable President has said, and he has said that I salute all the great personalities for their contribution in the development journey of our country in these 75 years of independence. I put emphasis on this very sentence of the Honorable President because there are some people in this country
who refused to recognize the contribution of all those great leaders who laid the foundation of a new India after independence, including the first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. There are a whole of leaders in this country who not only fought for our independence, but after independence, they took over and laid the foundation to build up a new India, a prosperous India, a progressive India, a secular India, a India belonging to all sections of the people, all sections of the citizens. Therefore, sir, I think the President has very rightly, at the outset of his speech, has saluted all those great personalities for their contribution in the last 75 years of our independence. Sir, for one thing, I appreciate the attitude of this government, Modi's government, that in some respect they are taking a very nationalistic approach. And sir, it is a very, very good decision that Netaji Subhash Chandra Bose, we all know about his contribution to the freedom struggle of this country. And many people think that had Netaji been alive and had Netaji been in the helm of the affairs of the country after independence, the shape of our independent India would have taken a different direction. But unfortunately, that couldn't happen. And unfortunately, sir, there are some people in this country, I don't want to indicate who are those people, in order to eulogize some other leader, I think the contribution of Netaji and some other leaders of Netaji were very conveniently forgotten. People refused to recognize their contribution to this country. So this government has very rightly taken a decision. I therefore compliment the Honorable Prime Minister that the Republic Day celebration will start from the birthday of Netaji, that is 23rd of January every month. It is a very, very welcome decision this government has taken. So another very important decision and very impressive decision this government has taken to observe Bir Bal Divas on 26th December in the memory of sacrifice of Sahib Dazad, the son of the 10th Guru Govind Singh, for their unparalleled sacrifice during the Muslim era. Sure, there are some other Bal Birs in this country which sacrifice is memorable, that cannot be forgotten. I will cite one example from my own state, Odisha. There was a boy, his name was Baji Raut. He was an 11, 12-year-old boy. And he bravely faced the bullet of the Britishers that time. He refused, he was a boatman. His father was a boatman. His father was ailing. Therefore, he took charge of the boat. And when the British soldiers came to the river bank and asked the boy to open the boat to take them to the other side so that they can go and invade a village and arrest some freedom fighters, this 12-year-old brave boy, Baji Raut, refused. And he was shot at. And he became a Shaheed. So there are some other such Bal Birs in the country. My point is, all the sacrifice history of such Bir Bals of this country should be collected, and memorials should be constructed in their memory, and history should be give proper place to the sacrifice of such people. Therefore, it is a very good step that the government has started observing the Bir Bal Divas. I therefore also compliment this government, sir. Sir, the Honorable President, if you go to para 22 of the speech of the Honorable President, he has said about the farmers, empowering the farmers of this country. A very, very welcome thing, sir. The President has mentioned about empowering the farmers and rural economy of the country. I'm not going to delve in detail about the rural economy, sir, because I know you will not give me time. I have very limited time. And other members have very elaborately yesterday and day before have explained what is the rural economy in this country now. And the President has also very complimented the farmers, sir. Despite pandemic, farmers produced more than 30 crore tons of food grains, and 33 crore tons of horticulture produce in 2020-29, despite the pandemic situation, sir.
And agriculture export reached a record level and registered a growth of more than 25%, valuing rupees 3 lakh crore. This is the contribution of the farmers of this country. In the question hour, we are discussing about Swaminathan Commission, minimum support price pertaining to the farmers. Sir, if the farmers can contribute so much to this country, in return, what is getting? What the farmers is getting? Farmers' income have not been doubled. This is the premise of this government that by 2022, farmers' income is doubled. I will ask personally to the government, can the government say that by now it has been able to double the income of the farmers? Can they say it? No, sir. The farmers of the income has not yet been doubled. Sir, had the farmers' income been doubled, you'll be astonished to know that why the farmers of the country are still committing suicide every day. Sir, it is not my report. It is the report of the National Crime Record Bureau. It is NCRB data. And according to the NCRB data, as many as 42,480 farmers and daily wagers committed suicide in 2019. This is 2019 report, not the latest report, which is an increase of 6% from the previous year. So every year the number of farmers' suicide is going on. Why? If they are getting the MSP, now in the question hour I put the question, and other honourable members also put the question about MSP. I think government gave a very evasive reply. Government is not coming out with a reply whether they will bring a law in this house to ensure MSP legal coverage to MSP. Government refused to do that, and that is one of the demands of the agitating farmers of this country, sir. And most of the farmers in this country, they are small and marginal farmers, and they are committing suicide. The farm laborers are committing suicide. If the economic standard of the farmers, the government has been able to increase, then why the farmers is compelled to go for committing suicide? Has the government an answer for this, sir? So this is a very pertinent question, sir. The plight of the farmers, I don't think, had the farmers been in a happy condition, in a very sound economic condition, thousands and lakhs of farmers would not have been gone for agitation in the border of this country. Sir, just now the Railway Minister is very much present here. I will compliment the Railway Minister that he has given a good amount of sanction to the different projects of Odisha, sir. I compliment him. Sir, but one thing, sir, why step-motherly attitude is being shown to Odisha, my own state? Sir, I will give only one example. Our CM has repeatedly asked for unification of all railway assets over Odisha state under East Coast Railway headquarters at Bhubaneswar. But we are told that zones are not formed on state boundary line. The reply of the government is, zones are not formed on state boundary line. Okay, sir, I agree. Zones are not formed on state boundary line. But now the South Coast Railway zone has been formed on state boundary line. And at which cost? At the cost of the East Coast Railways. Why this discrimination, sir? When our request has been turned down, then why is in some other state you are going for state level boundary and constituting the railway zone, sir? Sir, you have taken away a portion of Andhra Pradesh from East Coast Railway. Then why Raurkela and Jharsuguda, etc.? This is our old demand. Now Jharsuguda and Raurkela, it is a Chakradharpur division outside Odisha. So our request is, you bring Raurkela and Jharsuguda and other areas, constitute a separate division, merge it with the East Coast Railways. The reply is, railway zones are not constituted on state boundaries. If it is not constituted on the basis of state boundaries, then why it happened in Andhra Pradesh? So therefore, sir, we feel that in some respect, discrimination is meted out to my state, Odisha, sir. Sir, the President has mentioned about forming 2 All India Institute of Medical Sciences in Jammu, one in Jammu and one in Kashmir. I welcome it, sir. It is a very, very good decision, sir. But, sir, there are some other areas in this country
but health services are very poor. I will cite one example. It is Sundargarh in Odisha, sir. It is a tribal-dominated area, and it is adjacent to Jharkhand, which is also a tribal-dominated area. So, the request of my state government, my Chief Minister Nirmala Patnaik has been all the time requesting the central government to open an AIMS institute in Sundargarh, sir. I welcome the decision of the government that 2 AIMS are being opened, one in Jammu and one in Kashmir. But some other areas in the country are there, mostly dominated by the tribal population, where health services are poor. So therefore, our request is to open a AIMS at Sundargarh as well. Sir, there are some states in the country, Odisha, Bihar, Jharkhand, they are mining state, mine-producing state, mine-bearing states, sir. And Government of India is collecting a clean environment cess. Earlier per ton, they were collecting 200 rupees. Now it has been enhanced and they are collecting 400 rupees per ton collected by the centre. Sir, Odisha government have requested for renaming the cess as Environment and Rehabilitation Cess. Sir, we are suffering. The mine-bearing states are suffering. Our environment is polluted. Our trees are cut. And Government of India is collecting the cess in the name of clean environment cess. And we, this mine-bearing state, we do not get a single pie on that. So my Chief Minister Nirmala Patnaik has always been requesting that rename it as cess, environment and rehabilitation cess, and earmark at least 60% of coal for the coal-bearing states. This has been our request. Government of India is not considering. Sir, cess and surcharge. Sir, the share of this gross tax revenue for the Union government increased from 7.5% to about 19% in the last 20 years. Cess and surcharge. Government of India is imposing cess and surcharge on petroleum, on petrol, on diesel, on liquor product, and some other products also. And the increased trend of centre to rely on cess and surcharge denies the states their rightful share in tax devolution. Because the cess and surcharge amount, it is not going to the divisible pool. And the states are not entitled to get a share of it as per the recommendation of the Finance Commission, sir. So, our request to the central is that the revenue thus generated should form of the divisible pool so that the concerned states can get a benefit of that thing. Sir, during the pandemic, okay, the central government spent a lot of money. The state government as well spent a lot of money for that, sir. But from that fund will come. So that this is our genuine and rightful demand. So I urge upon the central government to consider. Sir, the Honorable President in his speech has mentioned about women empowerment. And the President says, women empowerment is one of the top priority of the government. Sir, it is just contrary of the fact, sir. Sir, okay, Beti Badhao, Beti Bachao, Beti Padhao, lot of slogans are being there, sir. Sir, I will say only one thing, sir. Okay, People Talak Bill was passed by this House. And we said that among the minority communities, Muslim communities, lot of superstitions are there. We have to deal with that. And everybody supported the People Talak Bill, sir. Sir, I will put one question here. What happened in Sabarimala in Kerala? What was the judgment of the Supreme Court? What was the stand of the Bharatiya Janata Party? There are two All India largest national political parties. One is Bharatiya Janata Party, one is Congress Party. What was our stand on that? On the one hand, we say about women emancipation. And on the other hand, we support preventing the women from entering into a table. We are not even prepared to go by the judgment of the Supreme Court. What was the Supreme Court judgment? Supreme Court held about Sabarimala that any exception placed on women because of biological differences violates the Constitution. It violates the right to equality under Article 14 and freedom of religion under Article 25. Why this double standard? On the one hand, we say about women emancipation. On the other hand, we prevent the women from entering into a temple and pray and offer their prayer to the Lord. So this is double standard, sir.
So I think we should, about women reservation bill, sir. Sir, this House passed this women reservation bill in 2010. But still that bill has not become an act, sir. Sir, women will be astonished to know, sir, women represent 10.5% of the total members of the Indian Parliament. It is the latest. What is women representation in Rajya Sabha and in Lok Sabha, sir? And in the legislative assembly across all the state, it is a pitiable 9% only. If you take into consideration the women representation in all the assemblies together, it is hardly 9%. And it is not my report, it is the report of Election Commission of India, sir. Sir, even in Muslim countries, those who are considered to be very conservative people, even in Muslim countries, women representation is much more than what we have here. And even Pakistan and Bangladesh, two Muslim-dominated countries, they have passed the Women Reservation Bill, Act. But we are reluctant. Why? On the one hand, we say of women emancipation. On the one hand, we say of beti badhao, beti bachao. On the one hand, we say of bringing the women to the mainstream of the society. But still we refuse to give them their political right. Why? It was done by them also. It has been done by these people also. So why not this government is bringing this bill? What prevents them? So this is, I'm sorry to say, this is just hypocrisy. So I urge upon this government, it is high time, please bring this bill of women reservation. Sir, your time is over, and I'm coming. also concluding, sir. Yes. Very shortly I'm concluding. Give me 2-3 minutes more time, Please. sir. Sir, one important thing I want to say, that Odisha is a cyclone-prone state. Natural calamities all the time hitting Odisha. You will be surprised to know, during the last 100 years, we have been hit by natural calamity for more than 90 times. Flood, drought, cyclone, super cyclone, and that is devastating our economy. That is devastating our economy. So we have been requesting, our Honorable Chief Minister Naveen Patnaik has all the time requesting central government to give a special category status to states like Odisha. If not special, at least a special focus category status to Odisha, and treat us as part of the northeastern states and the Himalayan states, and give that economic benefit to the state like Odisha that is not being heeded by the central government so far, sir. So, sir, last point I will say, sir, about federalism. This is a federal country. Our constitution provides for federalism, sir. But we feel this House knows it. In every bill, there is one or two provision taking away the right of the state government. What type of federalism this is, sir? And the latest decision the government has taken, that at any moment, central government can withdraw any IS officer from any state without the consent of the particular state. What type of federalism this is? What type of federalism this is? So you are not strengthening the federal character of our constitution of our country, we are weakening it. So therefore, my submission to the central government, kindly desist from doing this. This is a federal country, and federalism is our essence. You can't go away with this. So therefore, sir, if we want to take this country unitedly, if you want this country to progress, develop unitedly, if you want to take all the states to the mainstream of development of this country, don't eschew the principle of federalism. With this, sir, I, in spite of the fact that there are few contradictions in the speech of the President, करनी और कथनी में बहुत फर्क नजर में आता है. In spite of that, I support the motion of thanking the President on his address to the joint session of Parliament. Thank you, sir. Thank you, Prasanna Acharya ji. The next speaker, Shri K. Somu Prasad. I think he is in Lok Sabha chamber. I am in Lok Sabha. Lok Sabha, sir. Yes, sir, please. Thank you, sir. The Honorable President, in his speech, tried to sketch a
picture of a colorful and bright present and future India. According to him, India is a fast developing nation without poverty, malnutrition, unemployment, illiteracy, etc. As per his version, the Indian citizens are living in a semi-paradise. And when the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji complete his tenure, India would become another paradise. But what is the reality, sir? It is far away from the sketches. The presidential address does not narrate the real picture of the political, economical, social realities of the country, sir. The content of the speech is nothing but the usual combination of high rhetoric, unrealistic claims of the achievements of the government, sir. Sir, let me permit to record my reservations, disappointments, regret about the presidential address. Sir, when the Honorable President spoke about the handling of pandemic, he became eloquent. But we know the central government was an utter failure in handling the situation. Sir, how could we forget the floating dead bodies in the river Ganga? How could we forget the died innocent children and patients without getting oxygen and treatment at the proper time? How could we forget the long queue of the dead bodies in the crematoriums? Sir, the Honorable President said about vaccination. Sir, population-wise, we are the second largest country in the world. Administering 150 crores vaccines to 100 crore people within 1 year is not a big deal. It could have been finished earlier. Actually, the government failed to administer 2 doses of vaccine to the entire citizen within this period. Sir, the President praised the frontline workers of the pandemic. But what the government did for them? Had the government provided any security, any protection, any insurance facilities to their life, any incentive? Nothing, sir. Sir, when we go through each and every performance of the government, especially in the pandemic period, the government did not act properly. The government was utilizing the pandemic situation to implement its anti-people policies over them. The price hike of the petroleum products and the disinvestment of the public sector undertakings are the best examples, sir. The government is selling the share of the public sector undertakings which are running profitably and using the money to save private sector companies which are running in loss. Sir, who can support the price hike of domestic LPG and kerosene? Sir, the youth, especially the educated youth in India, are in severe frustration and mental agony because of the less job opportunities. Every day the unemployment rate is increasing. Disinvestment of the PSUs never help to create new job opportunities. Moreover, it would decrease the existing job chances. Sir, at the same time, the government is not ready to fill the existing vacancies. As per documents of the Government of India, a large number of posts in different ministries are kept vacant for the last several years. Total number of vacancies would come about 12.3 lakhs, sir. In the Defence Ministry itself, there are 2.4 lakhs civil posts are vacant, 1.28 lakhs in the Home Ministry, while it is 2.37 lakhs in the Railway. More than 7,000 vacancies are there in Health and Family Welfare Ministry. In the higher education section, it is 25,000 vacancies, sir. Sir, in the Central Police Force, the vacancies are 96,000. Sir, the disinvestment and undeclared ban on appointment would badly affect the marginalized sections and Dalits. The Honorable President again keep mum on issues like social justice and reservation in his speech. Sir, what is the contribution of the government in NRE section? The government is dividing the workers according to their caste and religion. Separate wages for SC, ST and general categories, sir. The workers who are working together in the same field are divided as ST, SC and general category workers. It is too bad, sir. The wages for SC, ST workers is not distributed properly. 3 months wages arrears are pending in Kerala. It should be cleared immediately, sir. Sir, there are lakhs and lakhs of contract workers and scheme workers working for several years. But the President in his speech, nothing mentioned about the regularization of the scheme workers. The Honorable President in his speech explained about the Prime Minister's Awas Yojana. He said that more than 2 crore Pakka houses had been provided to the poor. I welcome, sir. But as per the socio-economic
caste census, there are 24.39 crore households in India. Out of it, 17.91 crore are living in villages. Out of the 17.91 crore rural households, 56% are landless, sir. Let us examine the status of the SC and ST. 70% of the SC and 50% of the ST are landless. Sir, without a piece of land, how could they construct a house? Land reform is the only remedy, sir. The President is keeping mum on this serious matter. Sir, disinvestment of the public sector undertaking badly affects the job chances of the weaker sections, especially SC, ST in the society. Reservation in employment is introduced only in government jobs and public sector undertaking. When a public sector undertaking becomes a private one, there ends the reservation in employment. Sir, in order to compensate the job loss due to the privatization, the demand for job reservation in private sector should be considered very seriously, sir. Sir, moreover, there are several government departments, including defense and judiciary, where the reservation is not implemented. Sir, without diluting the educational qualification or physical fitness, the reservation can be implemented even in defense department. Sir, in judiciary, also reservation can be implemented without diluting educational qualification and bar experiences, sir. Sir, as you know, in Kerala we have a very good health care system up to the bottom level. There is a long-standing demand for Kerala. The demand of Kerala for aims, it is still pending without consideration, sir. Sir, as per our constitution, India is a union of states and the constitution gives much importance to the federalism. The constitution upholds the federal character, but the central government always imposes unilateral decisions on the state governments and curbs the state power. Sir, the governors appointed by the center most of the time are acting as political agents of the central government. The Tamil Nadu example is the nearest one, sir. That is, now the amendments in consent rule related to the deputation and transfer of IAS officers is one of the best examples, which reveals the intention of the centre to interfere in the state administration. The centre should withdraw from such unconstitutional movements, sir. Thank you, sir. Thank you, Somu Prasad ji. Now I request Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया वाइस चेयरमैन साहब, थैंक यू सो वेरी मच। मैं अपने दल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राष्ट्रपति जी के महामहिम के अभिभाषण के प्रस्ताव पर अपना पक्ष, दल का पक्ष रखने खड़ा हुआ। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, शुरुआत यूं हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद हमारे यहाँ इस रवायत की शुरुआत हुई। उससे पहले हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं थी। एक और ऐतिहासिक तथ्य जो मैं सदन के अपने साथियों के समक्ष रखना चाहूंगा कि 1950 में भी 31 जनवरी को ही अभिभाषण हुआ था। 31 जनवरी 1950, जब हमारे तब के महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से आते थे, देश के सर्वमान्य नेता थे, उन्होंने अभिभाषण दिया था। तो 72 वर्ष बाद ये एक संयोग है, लेकिन 72 वर्ष के अभिभाषणों के दायरे में अगर सर सोचे तो कई चिंता की लकीरें हैं, और चिंता की उन लकीरों को हमने अभिभाषण के पक्ष में, अभिभाषण के दौरान नहीं देखा। इसलिए मैं शुरुआत करूंगा कि बेवफा बावफा नहीं होता, बेवफा बावफा नहीं होता, वरना इतना बुरा नहीं होता। हमने तो सोचा था, बाद लुटने के ये पता चला कि रहजन रहनुमा नहीं होता। खैर, बहरहाल सर, मैं कुछ छोटी छोटी चीजें इस संदर्भ में रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, मुझे पता है कि इस संदर्भ की गरिमा क्या है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक बहुत बड़ी चीज होती है, देश का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक दिशा और दशा देने की कोशिश होती है। हम विपक्ष में हैं, लेकिन देश की दशा और दिशा से चिंतित अगर हम हैं तो अभिभाषण की पंक्तियों में भी वो चिंता की लकीरें दिखनी चाहिए थी। जब वो चिंता की लकीरें नहीं दिखती हैं तो एहसास होता है। कभी कभी मैं सोचता हूं माननीय सभापति महोदय
कि महामहिम सोते जागते अपने सलाहकारों से बात करते, टेलीविजन देखते, सोशल मीडिया देखते, संवाद करते, क्या उनको नहीं लगता होगा कि देश के विजुअल्स बहुत अच्छे नहीं है? छात्रों पे आंसू गैस के गोले क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। और वो 2 करोड़ वाला भी नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे बाकी वाला बचा हुआ दे दो। आपने लाठियां बरसाई। तो मैं ये सोचता हूं कि महामहिम के अभिभाषण में अगर इस तरह की चिंता ना हो तो सर भाषण ना कागज का पुलिंदा लगता है और अच्छा नहीं लगता है उसे कागज का पुलिंदा कहना। दूसरी चीज, माननीय सभापति महोदय, कोरोना पर मैंने विस्तार से इस सदन में चर्चा की है। कोरोना को लेकर के भी जो चिंता आनी चाहिए थी वो नहीं आई। अब आइए अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने कहूं, बजट को उसके लिए मैंने तय किया हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि सन 50 से लेकर अब तक किसी की भी सरकार हो, मैं जानता हूं ये लिखा कहां जाता है, लेकिन जहां लिखा जाता है मैं आग्रह करूंगा कि अगर हम सोच सके सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को दलीय दायरों से ऊपर कर दीजिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण, कल को आपकी सरकार ना हो, ये मैं अपील बाकी लोगों से भी करूंगा जो सरकार में आएंगे कल को, कल नहीं आएंगे परसों आएंगे, कभी तो आएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सर अभिभाषण को एक नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट बनाइए, नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट। राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति हैं, उनके सरोकार में देश का सरोकार दिखना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अब दिक्कत ये होती है ना माननीय सभापति महोदय कि अभिभाषण में सर्वेश्वर की एक लाइन थी सभापति महोदय, अगर तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? अगर तुम्हारा जवाब हां है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। इसी यही रख करके बात मैं खत्म करता हूं इस संदर्भ की। सर पैरा 4 माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का है, जो कहता है रिमेम्बरिंग द पास्ट एंड लर्निंग फ्रॉम इट। सर इतिहास की एक अपनी स्मृति होती है और स्मृतियों का एक इतिहास होता है, और विश्व इतिहास गवाह है सर, जिस किसी ने भी अतीत की स्मृतियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसको बदलने की कोशिश की, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। इतिहास नहीं बदला, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। नेताजी सुभाष बोस, अरे देश के नेताजी हैं, आपने उनको इंपीरियल कैनोपी में रखने का, अगर नेताजी कहीं से आ जाते हैं तो कहते कैनोपी मत रख भाई, दिलों में रख, दिलों में रख। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं नेहरू जी के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं बापू के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं तमाम उस दौर के लीडर्स के नाम। कहां कद था नेताजी का, नेहरू जी का, बापू का, पटेल का, और विवेचना कौन लोग कर रहे हैं? मैंने इसी सदन में कहा था कि बौनी समझ के लोग लंबा इतिहास नहीं लिख सकते, लंबी लकीर नहीं खींच सकते। एक बार चिंता करिएगा सर, मैं ये कह रहा हूं कि बापू के राम की संकल्पना करिए। अच्छा, इससे पहले एक हल्के में एक बात कहूं माननीय सभापति महोदय, मैं कभी कभी सोचता हूं 1952 में पहला चुनाव लड़ा हमने सर, 52 में हम पार्टीशन से निकल के आए थे, पीड़ा थी बहुत, लाखों लोग मारे गए उधर और लाखों लोग मारे गए इधर। लेकिन सर 52 का चुनाव हुआ था समावेशी विकास पर, रोजगार पे। 70 साल बाद हम चुनाव लड़ रहे हैं किस चीज पे? देख लीजिए। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में चुनाव हमारे नाम पे नहीं होता है, लेकिन हमारे यहां चुनाव पाकिस्तान के नाम पे होता है। अब मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना कहीं भी होंगे सोच रहे होंगे कि जो जीते जी मैंने नहीं पाया, भाजपा वालों ने मुझे मरने के बाद दे दिया। ये मैं समझता हूं हम सब के लिए सर चिंता का विषय होना चाहिए। सर मैंने कहा था कि बापू के राम, जब इतिहास की बात करते हैं सर, ये किताब है प्रार्थना खंड, बापू की किताब है, बापू की प्रार्थनाओं का संकलन है। मैं आग्रह करूंगा सब पढ़ें। जब नोआखोले से लौट के आए बापू, बहुत पीड़ा थी, उन्होंने अपना प्रार्थना बदल दिया। वो प्रार्थना भजमन प्यारे सीताराम की जगह भजमन प्यारे राम रहीम, भजमन प्यारे कृष्ण करीम। आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण और करीम के बीच में कटीली दीवार लगा रहे हैं।
राम और रहीम के बीच में दीवार लगा रहे हैं। ये दीवारें आज हो सकता है ताली दिलवा रही हो, आप मिट जाएंगे, ये दीवारें भी मिटेंगी। वक्त वक्त की बात है, बस एक बार सोचेगा जरूर, क्योंकि बापू पे माल्यार्पण आप भी करते हैं और बहुत, बल्कि आप चश्मे पे कर दिया, आपने महदूद कर दिया। बापू का चश्मा लीजिए, बापू को चश्मे में मत रखिए, ये मेरा आग्रह होगा। एक चीज तो ये थी सर, माननीय सभापति महोदय, कोविड के संदर्भ में मैं बोलूंगा नहीं, मैंने पहले ही कहा, इश्तेहारबाजी हो रही है। जो सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, जो सरकारें कोविड के वक्त में नदारद थी, सोशल मीडिया गवाह है, वो सरकार 4 पन्ने का इश्तेहार दे रही है। अब पहले नेता लोग काम करते थे तो लोग कहते थे अरे सोच ईमानदार है, काम दमदार है। अब लगता है दूसरे का भरोसा नहीं, खुद ही छपवा दो, सोच ईमानदार, काम दमदार। अरे लोगों को बोलने दीजिए। अब देखिए सर, दूसरी चीज कोविड के संदर्भ में मैं आपको कहूंगा, जब आप कहते हैं ना कि फलाने की तुलना में यहां इतने कम मरे वगैरह, 18 से तुलना करते हैं, सर जिन परिवारों के चिराग गुम हुए ना, उनके लिए मौत आंकड़ा नहीं है सर। मेरी बेटी की एक साथ में लड़की पढ़ती थी, 2 बेटियां थी, माता पिता 1 हफ्ते के अंदर दुनिया से चले गए। उसको नंबर बताएंगे हम कि ये आंकड़ा है तुम्हारे बाबूजी का, ये आंकड़ा है तुम्हारी मां का। ये नहीं होना चाहिए सर, इतनी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो सर। समानता और बंधुत्व के संदर्भ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा की गई है। सर मैं क्या कहूं, ये महादेव गोविंद रानाडे लेक्चर है। बस मैं कहना, बाबा साहब ने एक बात बार बार कही थी, वो कही थी कि भैया डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा है हीरो वर्शिप, उससे बचा लेना। लेकिन हमने क्या किया है, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को हीरो वर्शिप में तब्दील की है। आप कहिएगा पहले भी हुआ था, अरे जब पहले हुआ तो अच्छा नहीं था, अगर आज हो रहा है तो बुरा है। क्या हो गया सर, आजकल देखिए शब्दावली बदल गई है। वाजपेयी जी की सरकार एनडीए गवर्नमेंट कही जाती थी, या आपकी भी सरकार शुरू में जब बनी थी तो एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट, अब कहते हैं मोदी गवर्नमेंट, अब हो गई है केजरीवाल गवर्नमेंट। सर ये जो बीमारी है ना, पूरी सरकार व्यक्ति केंद्रित हो जाएगी ना सर, तो डेमोक्रेसी में दिक्कत क्या हो जाती है कि डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा कल्ट से होता है। इफ अ लीडर बिकम्स अ कल्ट, फर्स्ट द इंटरनल डेमोक्रेसी इज डिस्ट्रॉयड, then democracy everywhere is destroyed and everybody will suffer. आज भूपेंद्र जी ने किताब लिखी है राइज ऑफ बीजेपी। मैं समझता हूं बीजेपी कहीं अगर ऐसे हालात रहे, he has to write another book, fall of BJP. सर अब मैं ये कहना चाहता हूं, जब प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के लिए आदर और सम्मान की भावना, प्रोफेसर जी आपका, बहुत अच्छा लगता आपका टाइम सर, मैं बस एक आध 2 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं सर। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए भी कि वक्त भी अच्छा नहीं चल रहा है। सर माननीय महामहिम कहते हैं प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के लिए आदर और सम्मान की भावना। मैं आग्रह करूंगा सबों से, सिर्फ आपसे नहीं, हमारी शब्दावली क्या हो गई है एक दूसरे के लिए, हम युद्ध की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। किस तरह की शब्दावली का बिहार चुनाव में प्रयोग हुआ और किस तरह की शब्दावली का अभी चुनावों में प्रयोग हो रहा। अरे चुनाव कोई जीते, कोई देशद्रोही नहीं है इस देश में। हमारे आपकी संकल्पना में फर्क हो सकता है, ना मैं आपको देशद्रोही मानूंगा, ना आपको अधिकार देता हूं कि आप मुझे देशद्रोही कहें, क्योंकि तराजू पे तौलिएगा तो शायद चिंता आपको अपनी होगी, मेरी नहीं होगी। ये मैं कहना चाहता हूं। कहां से देशद्रोह का मामला आ गया सर? अब मैं ये एक कह करके खत्म ही करूंगा। मैंने पहले भी कहा था और दोहरा रहा हूं सर, ये जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स है, विमर्श है, सबको बैठ करके राजनीतिक विमर्श बदलना चाहिए, सब खत्म हो जाएगा सर। अब आइए पारा 15, 1 मिनट और लूंगा, 1-1.5 मिनट। फूड सिक्योरिटी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती है सर। गोदाम से पेट तक की यात्रा सुनिश्चित नहीं करवा रहे हैं आप अन्न का भंडारण आपको है, लेकिन हासिल क्या है? 116 मुल्कों में आप 101वें नंबर पे हैं। भूखमरी पेट की लानत सबसे बड़ी लानत होती है। अगर मंदिर भी बनवा रहे हैं तो उसमें प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, अगर मजार पे जा रहे हैं चादर चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। लोगों के पास कुछ बचा नहीं है।
ये चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं जानबूझ करके प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं जानबूझ करके डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शांता छेत्री जी के सवाल को खारिज करके आपने विंडिकेट कर दिया कि उनकी भावना क्या थी। सर पैरा 70 आखिरी ही है, पैरा 70 में आते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। सर बिहार इसमें आता है या नहीं आता? या बिहार से 39 सांसद ले लिए, बिहार का काम खत्म? सर मैंने पहले भी कहा था, अब बिहार ज्वालामुखी के ढेर पे है। लालू जी के टाइम से उस सदन में बात शुरू हुई, फिर राबड़ी जी हमारे मुख्यमंत्री, अभी नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पूरा भी भाजपा का बिहार विधानमंडल दल हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, दर्जा दीजिए। ये खैरात नहीं है। बिहार नहीं तरक्की करेगा तो देश की तरक्की में कभी 4 चांद नहीं लगेंगे, 2 चांद छूट जाया करेंगे, क्योंकि वो दोनों चांद पूर्वांचल से आएंगे। इसका आपको ध्यान रहे। सर मैं एक आखिरी कहूंगा, चंद्रशेखर जी के साथ बहुत लोगों ने काम किया है। उन्होंने एक बात कही थी बड़ी मार्मिक, रहबरी के सवाल में, घर के डिजाइन में आमतौर पर मतभेद हो सकता है सामान्य दिनों में, लेकिन जब घर में आग लगी हो ना तो डिजाइन में मतभेद नहीं होता है, सबको मिलकर आग बुझाना चाहिए। आज वो परिस्थितियां हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने भी असंतोष के लक्षण बताए थे बिहार जैसे राज्य में कि दिल्ली की नीति और नीयत की वजह से। मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि महामहिम संज्ञान लें। और आखिरी सर एक ये किताब है, मैं आग्रह करूंगा कश्मीर के बारे में। मेरे दोस्त, मैंने बार बार ये कहा है कि कश्मीर जमीन का टुकड़ा नहीं है, जम्मू जमीन का टुकड़ा नहीं है, लद्दाख जमीन का टुकड़ा नहीं है, जिंदा लोग बसते हैं। अगर आप यहां से नॉर्मल बोलते हैं तो घाटी में नॉर्मल लगना चाहिए। और मैं इसलिए भी कहूं कि ये लाल चौक एक यंग लड़के ने लिखी है सर, बिहार का लड़का है, उसने ये बात लिखी और कहा है कि नॉर्मैलिटी कैसे रिस्टोर की जा सकती है। सब पढ़ें। और आखिरी में सर 14 प्लीज कंक्लूड। 30 सेकेंड सर, नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा हुई, 14 सिविलियंस की बर्बर हत्या हुई। क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे? क्या उनके लिए एक शब्द नहीं होना चाहिए था? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभिभाषण सादा डॉक्यूमेंट ना हो, दर्द और पीड़ा हो, उसमें सब कुछ हो, ताकि वो हमारा अभिभाषण हो, आपका अभिभाषण हो, सबका अभिभाषण हो। बस इतना कह करके सर, जय हिंद। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। आपका बहुत बहुत आभार। सर मुझे मौका मिला है शिवसेना की तरफ से मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में कुछ अपनी राय रखने का। बहुत ध्यान से हमने राष्ट्रपति जी की स्पीच को सुना और उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने सरकार का पक्ष रखा, देश के सामने जो दिशा होती है वो रखने का काम किया। और उनके भाषण को सुनकर ऐसा लगा कि हमारे देश में अमृतकाल नहीं स्वर्णिम काल शुरू हो गया है। हमारे युवा बहुत खुश हैं, उनके पास रोजगार है, हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं, उनके पास सुरक्षा है, पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं। ऐसा लगा कि हमारे आम आदमी को किसी तरीके की दिक्कत ही नहीं है। पर सच्चाई और हकीकत आज देश के सामने है और मैं उम्मीद करती हूं और मैं बिलीव करती हूं, स्ट्रॉन्ग नेशंस आर नॉट बिल्ट बाय इनसिक्योर गवर्नमेंट्स और इनसिक्योर लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग नेशंस कैन ओनली बी बिल्ट जहां हम अपनी अच्छाई बुराई सब चीज का ब्यौरा देश के सामने रख सकें। उन्होंने किसानों की बात की। उनकी भाषण से तो ऐसा लगा जैसे किसानों की आय दुगनी हो चुकी है। हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं? खुश हैं किसान, खुशहाल हैं, प्रगति हो रही है देश की। पर सच्चाई ये है कि उस भाषण में एक भी बार राष्ट्रपति जी ने देश के सामने ये सच नहीं रखा कि 700 से ज्यादा हमारे किसान ने अपनी जान दी है। और इसलिए जान देनी पड़ी है उनको क्योंकि 3 काले कानून ये सरकार ने लागू किए, प्रजातंत्र के खिलाफ, हमारे संविधान के खिलाफ करके ये कानून पास हुए और इन्हीं किसानों ने उनको मजबूर कर दिया कि ये 3 काले कानून वापस लें। पर उस भाषण में कहीं भी उन 700 लोगों के बारे में, 700 किसानों के परिवारों को
किसी तरीके के लिए शोक संदेश नहीं निकल पाया। हम भूल जाते हैं किस तरीके से लखीमपुर खेरी हो या हमारे दिल्ली में बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे किसान हो, उनके ऊपर लाठी चलाई गई, कितनों को तो कुचला चल गया, पर वो मंत्री साहब के सुपुत्र आराम से बैठे हैं और मंत्री जी आए दिन यूपी चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। दुख इस बात का होता है कि जो संविधान की रक्षा करने वाली पद होता है, राष्ट्रपति जी का पद होता है, फेडरल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर का मुद्दा भी उन्होंने उठाया, पर किस तरीके से रोज फेडरल स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है, उस पर चुप्पी बांधे रहे। पॉलिटिकल अपॉइंटीज को गवर्नर के रूप में भेजा जाता है। महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, वो लोग केंद्र सरकार का एजेंडा चलाते हैं और जो उनकी जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। राष्ट्रपति जी ने युवाओं के बारे में भी कहा कि हमारे युवा प्रगति की ओर हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे 2014 से पहले, अभी थोड़े खामोश हैं। अगर हमारे युवा इतने खुश हैं तो मैं पूछना चाहती हूं, बिहार, उत्तर प्रदेश और सारे राज्यों में वो आज आक्रोशित होकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पर केंद्र सरकार वाह भाई वाह लूटने में लगी हुई है। केंद्र सरकार पीठ थपथपा रही है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुए हैं। आज ही मैं सवेरे सुन रही थी, इस बात पे चुप होती है। आत्मनिर्भर भारत करते करते रिकॉर्ड इंपोर्ट चाइना से आ रहा है। बेरोजगारी हमारे देश की चरम सीमा पर है। राष्ट्रपति जी ने महिलाओं के बारे में बात करी और हर बार सुनकर खुशी होती है कि महिलाओं के बारे में कुछ सोच है, सूझबूझ है सरकार को लेकर, पर हकीकत क्या है? वो देश की महिला और देश की महिलाओं से एक असुरक्षित माहौल जो बन रहा है, उस के बारे में एक चुप्पी बंधी हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आज नारा बेटी भुलाओ प्रचार बढ़ाओ बन चुका है। रिकॉर्ड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जिसकी मैं भी एक मेंबर हूं, उसमें कहा गया 85% ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बजट है वो प्रचार में खर्च किया जाता है। मंत्री जी ने आकर कहा 85% नहीं है, 58% है। अरे 50% से ज्यादा है और यह हमें गंभीर तरीके से लेना चाहिए कि सच में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं या नहीं पढ़ रही हैं। पर सच्चाई ये है कि कोविड कार्यकाल में डिजिटल डिवाइड हो, गरीबी हो और महिलाओं की प्रेफरेंस कम हो, बेटियों को स्कूल से निकाला जा रहा था, चाइल्ड मैरिजेस हो रही थी, मैल न्यूट्रिशन बढ़ रहा था, पर हमारी सरकार चुप्पी बांधे हुए थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात होती है कि डिजिटल सेफ्टी, डिजिटल सिक्योरिटी की बात होती है, पर जब महिलाओं पे, खास करके किसी समुदाय की महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी की जाती है, अश्लील बातें की जाती है, उनकी खरीद फरोख्त की जाती है, ये सरकार चुप्पी बांधे रहती है। सरकार से मैं कहती रह गई, निवेदन करती रह गई कि ये मामला महिला सुरक्षा का है, पर सरकार ने किसी तरीके का काम नहीं किया। और ये आज मुंबई पुलिस है जिसने महिलाओं को सम्मान देकर वो लोग जो इस तरीके का काम कर रहे थे उनको अरेस्ट किया। ऐसे रूल्स बनने जरूरी हैं। अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल सेफ्टी ऑफ विमेन इन डिजिटल स्पेसेस होना जरूरी है और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हमें कहा जाता है सर, बार बार ही कहा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, रिकॉर्ड जीएसटी हो रहा है, रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, पर ये रिकॉर्ड जीएसटी किस आधार पे हो रहा है? एमएसएमईज को खत्म करके हो रहा है, पीएसयूज को कौड़ी के दाम पे बेचकर हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ाते हुए हो रहा है और गरीबी रेखा में और लोगों को धकेल कर हो रहा है। और जो जीएसटी कलेक्शन भी हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जो स्टेट्स हैं उनको उनका जीएसटी कलेक्शन का राइट ड्यू भी नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है पर उनको जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सर कि जब हम अभिभाषण करें, हम भाषण करें, हम इन सब मुद्दों की बात रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगी सर
देश के डिफेंस में, देश की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बाकायदा जितना खर्च किया जाए वो कम है, पर वो खर्चा कर कर, देश की टैक्स पेयर्स मनी का खर्चा कर कर आप ऐसा स्पाईवेयर खरीदते हैं जो चाइना और पाकिस्तान की जगह देशवासियों के ऊपर ही इस्तेमाल करते हैं और किसी तरीके का संज्ञान भी नहीं लेते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यूएसए हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इजराइल खुद हो, उन्होंने पेगासस पे जांच शुरू की है और बार बार कह देंगे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है, हवाला देते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत तो बहुत सारे मुद्दे थे, पर फिर भी जब यूपीए का कार्यकाल था उस पर चर्चा आए दिन पार्लियामेंट में होती थी, पार्लियामेंट को ब्लॉक किया जाता था। तो पेगासस पे चर्चा क्यों नहीं हो सकती, ये मेरी आपसे सवाल है। होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात पेगासस में ये निकली है, जैसे मैंने कहा अब सारे देश उस पर इन्वेस्टिगेट करने को तैयार हैं। इजराइल खुद कह रहा है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। व्हाट्सएप और फेसबुक जो इनके यार हैं, उन्होंने भी कहा है किस तरीके से पेगासस का इस्तेमाल हो रहा है। सारे देश कह रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं, रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स कह रही हैं, फोन मेकर्स बोल रहे हैं। एकमात्र हमारा देश है जो स्प्लेंडेड आइसोलेशन में खड़ा होकर कह रहा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम महिलाओं के ऊपर पेगासस का इस्तेमाल कर सकते हैं। महिला जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, विपक्ष की नेता हो, हम उनपे हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, हम पेगासस डाल सकते हैं, उनके फोटोज को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका कैमरा यूज कर सकते हैं, उनका ऑडियो यूज कर सकते हैं। एकमात्र देश हमारा है जो एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। और यहां पे जो हवाला दे रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, शायद उनका भी नाम पेगासस की सर्वेलेंस रिपोर्ट में आया है। तो इट इज सच अ शेम कि आज उनको अपने आप को नहीं डिफेंड कर कर इस सरकार को डिफेंड करने पे मजबूर हुए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सबको साथ लेकर चलें। जब सबका साथ, सबका विकास की बात रखी जाती है तो सही मायने में हर वर्ग, पिछड़ा वर्ग हो, महिला हो या कोई भी ऐसे माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, वो सब आपके देशवासी हैं। इंडियंस फर्स्ट। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपना कर्तव्य उनके विकास की ओर, उनकी सुरक्षा की ओर और उनकी सारी जो उम्मीदें हैं इस देश से और इस देश की सरकार से, उसको पूरा करने का कर्तव्य आपका बनता है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खत्म कर कर ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल कर कर केंद्र सरकार जो राज्य सरकारों पे कर रही है उसको बंद करे और सही मायने में देश का जो सही दिशा और दशा है उसको तय करें। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Now I call upon Shri Kanakamedala Ravindra Kumar. 12:30. No, you can take your time. You can take your time. Sir, thank you, Deputy Chairman, sir, for giving this opportunity. The customary annual address of the Honorable President of India to the members of both the houses of Parliament has certain constitutional sanctity. Sir, the main stakeholders to ensure such developed and modern India over the next 25 years are the state governments. Our country is a union of states. The state governments are primary agencies of the implementation of various development and welfare projects initiatives, both central and state governments. Nobody disputes the fact that all-round development progress of our country critically dependent on the effectiveness of the state governments. So, Honourable Chairman, sir, the limited time available to me, I would like to place on the record on my concern that my party TDP as to how the present state of affairs in my state of Andhra Pradesh are proving to be a big hurdle realizing the dream of India that Honourable President evinced in his address to all the MPs on 31st of this month. I am sorry to state with the responsibility that the Andhra Pradesh is just in a state of total collapse. The Andhra Pradesh government is miserably failed in respect of parameters like administration, financial management, law and order that I have earlier referred in the progress. I would elaborate the same, sir. The state finances are utter chaos. The state government is just thriving on borrowing every day. Due to last 2.5 years, the state government has borrowed over 3.5 lakhs crores, various sources, and there is no proper accounts where the monies are there. New corporations are being created just the sole purpose of borrowing the funds to raised or spent on activities for which such corporations are set up. There is huge unauthorized diversion of funds.
The August House will be stunned to know the borrowings have been made, making the Honourable Governor as a guarantor by the name of the individual capacity. Sir, situation is so bad in the state of Andhra Pradesh. The employees are not being paid in time. Pensions are auto in state daily distress as they did not get their pensions in time. Reflecting the measure in the state of financial state, the further report last pay revision commission, the employees of the state wise now getting lower salaries. This because of the state government has not made any public policy, the PRC report, and instead of acting the recommendations of the committee, now the employees are served a strike notice and are now taking roads against the state government. Sir, I feel ashamed to share that the August House that the Andhra Pradesh government is not sparing the poor and the weaker sections in mobilizing the resources to run the day-to-day governance. To give an example, the poor and the weaker sections have built small houses year back are now being faced to pay about 10,000 each other under one-time settlement scheme. The large number of volunteers engaged by the state governments are being forced to foul means to collect the monies from the poor and weaker sections. The honourable members will be shocked to know that the state government has mortgaged revenues from liquor sale for a period of next 25 years to raise borrowings. This is being done by the ruling party, and that has promised during the election campaign of 2019 that liquor was banned gradually. In effect, the Andhra Pradesh government is running, pleasing the poor and weaker sections. The central government, through President address that we are now discussing, has called infrastructure development. I am sorry to say, my fellow members, that productive industrial economic activity in my state has come to a virtual halt. The Honourable President referred to study increase of GST revenues. The tax revenues has also substantially increased in recent times. Logically, revenues to my state have also been on rise. Still, infrastructure development has come to a complete halt in the state. Not even a kilometre of existing roads has been repaired since 2019, leaving alone laying roads, new roads. Accidents due to poor roads and the attendants' death are daily occurrence in my state. The poor are the worst hit due to a lack of basic transport infrastructure. The YSRCP government unmoved the situation so bad there is no response by the contractors to tenders floated by the state government. It's because they knew that the state government will not pay the works done with the government running on daily borrowings. Under the important Jal Jeevan measures, 500 crores has not been paid to the contractors. For the works done during the previous TDP government and the YSRCP government did not pay thousands of crores payment due to contractors, including Narega works. All funds have been diverted. It is only after a long legal battle, finally under the orders of the High Court, some payments were made. So the contractors are not... Ravindra Kumar ji, please stop your speech. You will continue on Monday. ठीक है ना? Obliged. जो your remaining part of the speech, that will you cover please on Monday. Obliged. Thank you. The time is over already. So now it's a private member business. Private member bills. Honorable members, just your attention please. During the private members legislative business day of the last session on the 3rd December 2021, Professor Manoj Kumar Jha, member, had opposed without giving any prior notice the motion moved by Sri K.J. Alphonse, member, for leave to introduce his private members bill, namely the Constitution Amendment Bill 2021, Amendment of Preamble. He had argued inter alia that preamble is part of the basic structure of the Constitution and the bill may not be allowed for introduction. He had also referred to Rule 62(2) of the Rules of Procedure and contended that such bill, which did not have the previous sanction or recommendation of the President, cannot be introduced in the House. It was clarified on that day by me that Rule 67 of the Rules of Procedure states that if a motion for leave to introduce a bill is opposed, the chairman, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion may, without further debate, put the question for the decision of the House. It was also informed that a decision on the motion for leave to introduce a bill had to be taken by the House and not by the chair. However, on a request made by the Minister of State for Parliamentary Affairs and after taking the sense of the House, the introduction of the bill was deferred. Preamble is part of the Constitution
and as per Article 368 of the Constitution, Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation, or repeal any provision of the Constitution, and a bill for the purpose can be introduced in either House of the Parliament. There are a number of instances in past when private members' Constitution amendment bills to amend the preamble have been introduced in both the Houses of Parliament, and they are on records. As already clarified by me on that day, that is on 3rd December 2021, if the introduction of a bill is opposed on the ground of legislative competence of the Council decides the same and not the Chair. There are a number of rulings given by the Chair in this House on this issue, taking the same stand in the past. I would like to quote a couple of them. On 4th September 1959, the then Deputy Chairman Rajya Sabha gave the following ruling, and I quote, Shri Bhupesh Gupta has introduced a bill for amending the Representation of the People's Act 1951. The Law Minister raised a point of order that the bill is ultra-virus of the Constitution, as it indirectly seeks to amend the Constitution by introducing a provision for recall under the guise of disqualification under the Representation of the People Act. This objection was not taken at the introduction stage, but I still feel that there is a strong force in the objection raised by the Law Minister, and it may amount to an amendment to the Constitution. But the Chair has never taken the responsibility of deciding the ultra-viruses or otherwise of a bill. There have been several decisions of the Chair in this connection. In fact, on 23rd April 1951, when an objection was taken in the Provisional Parliament to the Forward Contracts Regulation Bill that it was ultra-viruses of the Constitution, the Speaker observed. The position which I had made clear was that the question of ultra-viruses will not be decided by the Chair, but that it may be left to the House. If it comes to the conclusion that it is ultra-viruses, the House may reject the bill. If the House accepts the bill for consideration, then the party aggrieved has his remedy in the Supreme Court or other courts. Therefore, I said it was no use going in detail into questions of constitutional niceties, because after all, these are things which can best be argued by lawyers, and it is not proper to take the time of the House over this long discussion of niceties. Again in 1953, when the constitutionality of the Legislative Assembly Prevention of Disqualification Bill was raised, it has been observed. In all these matters, the Speaker has never taken upon himself the responsibility of deciding the point of order when it is constitutional or otherwise. It is for the House to take this also into consideration in voting down the bill or accepting it. Under the circumstances, I leave it to the House to accept or not to accept the bill, unquote. In another occasion, on the 11th May 1963, the then Chairman, Rajya Sabha, gave the following ruling, and I quote, I thank the honourable members for the assistance they have given me in coming to a conclusion. Prima facie, I think we can go on with the discussion, but I do not wish to give any ruling, because in the central legislature, it has been the accepted practice for the Chair not to take upon itself the responsibility of deciding whether the House has the legislative competence to entertain a bill or whether a bill is ultra-viruses. When any such question is raised, the usual practice has been to leave the matter for the decision of the House. The main reason for the adoption of this course is that a question relating to the legislative competence of the House or the constitutionality of the proposed legislation often involves much difficulty and complexity, and it is the function of the courts and ultimately of the Supreme Court to decide such a question. The presiding officer should not arrogate to himself the functions of the court, especially as he has not facilities or material on which to come to a satisfactory decision. It is the sole privilege and duty of the House to decide every question that arises on a motion moved by a member. So if the matter is left to the House to decide, the House may reject the bill if it is of the view that the bill is ultra-viruses. If, however, the House accepts the bill, the party aggrieved will still have the remedy in the courts and ultimately in the Supreme Court.
This question came before the central legislatures on various occasions, and the accepted practice has been as stated by me, unquote. As regards the objection raised by Professor Manoj Kumar Jha under Rule 62(2), the bill does not have the previous sanction or recommendation of the President. I may clarify here that there is no such requirement for introduction of the bill under reference. Therefore, there is no question of any doubt on the admissibility of the bill for introduction seeking to amend the preamble to the Constitution. Be that as it may, the bill has been listed in today's agenda for introduction. The House may decide about the manner of disposal of the motion when the motion for introduction of the proposed Constitution Amendment Bill 2021, amendment of preamble, is moved by Sri K.J. Alphonse. Thank you. Sir, I do not think that the House itself also has any mandate or is competent to amend the preamble of the Constitution. Neither the Council of States nor the House of the People. Nor the House of the People. So it's very clear that what is enshrined there, it's not a question of tinkering with the basic structure. There are umpteen judgments of the Supreme Court also on that cannot be. And various governments, if they have come up with any constitutional amendment which has been challenged and questioned, they have been cast aside by the Honorable Supreme Court. Here we are talking of the very preamble of the Constitution. So I would say, rather urge the member concerned also, that in the larger interest of this country, where questions are being raised about the integrity of our commitment to the Indian Constitution and its preamble, this should not be entertained. Thank you. Thank you, Mani Anandji. Please. Yes, please. Point here, sir. So we also know that two changes were brought in the preamble to the Constitution by the 42nd Amendment in this country, sir. Two words, socialist and secular, were inserted into the preamble. So it is not that the preamble cannot be changed. Thank you. Mani Sukhendu Sekhar. Sir, I support the views expressed by Mr. Anand Sharmaji and Manoj Jhaji. In Keshavananda Bharati case, the Honorable Supreme Court, they decided inter alia that sovereignty of Parliament is there, but the supremacy of the Constitution cannot be ruled out. So, whether it is Parliament or any other constitutional or statutory authority, they have to abide by the Constitution. Since the point raised by Anand Sharmaji and the other speaker who has said about the constitutional amendment, that is altogether a different thing, and it happened long back before the judgment delivered in Keshavananda Bharati case. Absolutely. Therefore, that judgment of Keshavananda Bharati is still subsisting, and I would request the chair not to allow this. Mani Sadasya, please. Sir, the question I think here is that whether we can add a sentence to the preamble or not, but whether the basic structure of the Constitution can be amended or not. The country believes, the Constitution believes that these words is a part of the basic structure that can be challenged. Supreme Court and the Parliament many a times told us that. Now a time has come when somebody is coming here to change the Constitution and the basic structure. That can't be allowed. Yes. Abdul Wahab ji. You are the last speaker now. I will close it. Please, no. Please. No, it's not open discussion. This one, amendment of Constitution. Okay, the bill came. Where is the proposer? Sitting in the Central Hall? Thank you. माननीय सदस्यगण, चेयर की पोजीशन इसमें क्या है मैंने क्लियर की कई रूलिंग से, एंड आई हैव ऑलरेडी क्लेरिफाइड, कोटेड 4th September 1959 ruling. Number 2, yes, again in 1953 Legislative Assembly Prevention of Disqualification Bill, such matters were settled here by ruling. Again on 11th May 1963 the ruling was very clear. So far as chair's role is concerned, so chair, the house can decide or the court can decide, not the chair. That is. Please take your seat. No, I have not allowed.
Let us close this discussion. Let us close this discussion, Mani Anand. I am moving. Please, please. You have already availed your occasion. Please. I have already clarified the position. One sentence. Sir, everyone sitting here, whether it's the government, the ministers, Honorable Chair, and all of us, have sworn by this Constitution as members when we are sworn in. Thank you. Can we then change the preamble? Thank you. माननीय सदस्यगण, ये सारे जो हमने रूलिंग्स कोर्ट की, ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ही सारे प्रोविजंस यहाँ रूलिंग में दिए गए हैं सिंस 1951. So I am not going on detail. Private members legislative business bills for introduction. The Uniform Civil Code in India Bill 2020. Dr. Kirodi Lal Meena. Dr. Kirodi Lal Meena. Just wait. Yes, please. Please, Dr. Kirodi Lal Meena, not present. Since he is not present, not moved, I am not going to allow any discussion on this. Yes, you had. Dr. Amar Patnaik, the Constitution Amendment Bill 2020, Amendment of Preamble and Article 51A. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2020. So I, Dr. Amar Patnaik, move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India for insertion of the word ahimsa in the preamble to the Constitution. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Amar Patnaik, please. I introduce the bill. The Lokpal and Lokayuk's Amendment Bill 2021. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the Lokpal and Lokayuk's Amendment Bill 2021. So I, Dr. Amar Patnaik, rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Lokpal and the Lok Ayuktas Act 2013. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Ayes always have it. Dr. Amar Patnaik, please. I introduce the bill. The Central Educational Institutions Reservation in Admission Amendment Bill 2021. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the Central Educational Institutions Reservation in Admission Amendment Bill 2021. So I rise to introduce a bill further to amend the Central Educational Institutions Reservation in Admissions Act 2006 to provide for reservation for students from government schools in central educational institutions. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Amar Patnaik. Sir, I introduce the bill. The Epidemic Diseases Prevention, Preparedness and Management Bill 2021. Sri Derek O'Brien to move for leave to introduce the Epidemic Diseases Prevention, Preparedness and Management Bill 2021. Sri Derek O'Brien ji, not absent. The Criminal Laws Amendment Bill 2021, Dr. Prashant Nanda to move for leave to introduce the Criminal Laws Amendment Bill 2021. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Indian Penal Code of Criminal Procedure 1973. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Prashant Nanda ji. I introduce the bill. Thank you. The Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2021, Sri Subhash Chandra Singh to move for leave to introduce the Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2021. Sri Subhash Chandra Singh.
Not present. Shri Subhash Chandra Singh. Absent. Shri K.J. Alphonse to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2021. Shri K.J. Alphonse. Absent. Dr. V. Sivdasan to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2021. Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend Constitution of India. Constitution Bill 221 Amendment of the Preamble. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Sivdasan. I introduce the bill, sir. Thank you. The Right to Health Bill 2021. Professor Manoj Kumar Jha to move for leave to introduce the Right to Health Bill 2021. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. I move for leave to introduce a bill to provide for health as a fundamental right to all citizens and to ensure equitable access and maintenance of a standard of physical and mental health conducive to living of a life in dignity and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Professor Manoj Kumar Jha. Sir, thank you. I introduce the bill. The Indian Penal Code Amendment Bill 2021, Sri Elamaram Karimji to move for leave to introduce the Indian Penal Code Amendment Bill 2021. Thank you, Deputy Chairman. I, Elamaram Karim, to move for leave to introduce a bill further to amend Indian Penal Code 1860. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri Elamaram Karimji. Introduce the bill. Thank you. The Labour Codes Repeal Bill 2021. Sri Elamaram Karimji to move for leave to introduce the Labour Codes Repeal Bill 2021. Sir, I move to leave to introduce a bill to repeal certain enactment related to Labour's Code. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri Elamaram Karimji. I introduce the bill. The Council of Climate Change Bill 2021, Srimati Priyanka Chaturvedi ji to move for leave to introduce the Council on Climate Change Bill 2021. Thank you, Chairman, sir. I rise to move for leave a bill to provide for the establishment of the Council as a centre and in each state and union territory for climate change action and the matters connected therewith or incidental thereto. Thank you. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Srimati Priyanka Chaturvedi ji. I introduce the bill, sir. Thank you. The Epidemic Diseases Amendment Bill 2021, Srimati Priyanka Chaturvedi ji to move for leave to introduce the Epidemic Diseases Amendment Bill 2021. Sir, I rise to move for leave a bill further to amend the Epidemic Diseases Act to keep in mind the significance of clear and consistent public health emergency law. Thank you, sir. Thank you. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Srimati Priyanka Chaturvedi ji. I introduce the bill, sir. Thank you. The Darjeeling Sports University Bill 2021, Srimati Santa Chetri to move for leave to introduce the Darjeeling Sports University Bill 2022. Srimati Santa ji from Lok Sabha. Thank you, sir. I, Srimati Santa Chetri, to move for leave to introduce the bill to establish and incorporate the Darjeeling Sports University in the state of West Bengal. Thank you, sir.
The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Srimati Santa Chhetri ji. Yes, sir. I introduce the bill. Thank you. The Crop Diversification Corporation of India Bill 2022. Sri Pratap Singh Bajwa ji to move for leave to introduce the Crop Diversification Corporation of India Bill 2022. Absent. The Victim Impact Statement Bill 2022. Sri Pratap Singh Bajwa ji to move for leave to introduce the Victim Impact Statement Bill 2022. Not present. Absent. The Constitution Amendment Bill 2022, substitution of Article 168 and omission of Article 169. Dr. Fawzia Khan to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2022, substitution of Article 168 and omission of Article 169. Chairman, sir, I seek to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India, Article 168 and the omission of Article 169. Thank you. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Fawzia Khan ji. Sir, I introduce the bill. Thank you. The Criminal Laws Amendment Bill 2022, Dr. Fawzia Khan to move for leave to introduce the Criminal Laws Amendment Bill 2022. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Indian Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1973, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Fawzia Khan ji. Sir, I introduce the bill. Thank you. The Victims of Acid Attacks, Rehabilitation, Support and Healthcare Bill 2022. Dr. Fawzia Khan to move for leave to introduce the Victims of Acid Attacks, Rehabilitation, Support and Healthcare Bill 2022. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to ensure proper rehabilitation and relief to victims of acid attacks and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Fawzia Khan ji. Sir, I introduce the bill. The Constitution Amendment Bill 2022, Amendment of the 7th Schedule. Sri P. Wilson to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2022, Amendment of the 7th Schedule. Sri P. Wilson. Thank you, please. Deputy Chairman, sir. In the year 1976, the state's power to legislate on education, including technical education, medical education and universities, was taken away from List 2 by constitutional amendment and same was kept in List 3. The bill seeks to restore and partition the power over these subjects parallelly between the state and the central, following the true spirit of cooperative federalism. For that purpose, I raise to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India, namely the 7th Schedule. Thank you, P. Wilson ji. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri P. Wilson ji. Thank you to the House and the Chairman. I introduce the bill. Thank you. Now, bills for consideration and passing. The Companies Amendment Bill 2019. Further consideration of the following motion moved by Dr. Binay P. Sahasrabudhe ji on the 3rd December 2021, that the bill further to amend the Companies Act 2013 be taken into consideration. On 3rd December 2021, the minister concerned had concluded his speech while intervening in the discussion. The mover of the bill may accordingly be called upon to reply the discussion. Dr. Vinay P. Sahasrabudhe ji, please reply. धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। सदस्यों को पता ही है, सदन जानता है कि 3 दिसंबर को, जैसे कि अभी आपने उल्लेख किया,
Companies Amendment Act 2019, Companies Amendment Act 2019, इस नाम से मैंने जो एक विधेयक यहाँ पर रखा था, एक प्रस्ताव रखा था, उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से चर्चा हुई और विपक्ष से श्रीमान जयराम रमेश जी, फिर डॉक्टर सस्मित पात्रा जी, श्री विजय साई रेड्डी जी, श्रीमती अमी याज्ञिक जी, हमारे मित्र श्री मनोज झा जी, फौजिया खान जी, महेश पोदार जी, हर्षवर्धन डूंगरपुर जी और प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी ने इस विषय पर अपने बिंदु रखे थे। इसमें से श्री जयराम रमेश जी ने और अमी याज्ञिक जी, मनोज जी, फौजिया खान जी, इन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया था और विरोध में कुछ अपने तर्क भी बताए थे। बाकी सदस्यों ने इसका समर्थन भी किया था और इस तरीके से कानून में परिवर्तन होकर जो CSR का 2% होता है, उसमें से उसका 25% ये हमारी जो धरोहर है, हमारी जो विरासत है, हमारे यहाँ जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स है, उनकी सुरक्षा के लिए उपयोग में लाने के प्रति एक प्रावधान किया जाए, मैंडेटरी किया जाए, कानूनन उसको एक बंधन के रूप में लागू किया जाए। इस प्रस्ताव के प्रति बाकी सदस्यों ने समर्थन भी जुटाया था। कुल मिलाकर इस संदर्भ में हमारी भूमिका, मैंने स्वयं जब प्रस्ताव रखा था तब यही थी कि जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का दौर अभी चल रहा है और सारी चीजें केवल सरकार करे, इस धारणा से पूरा समाज भी बाहर आ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे सबको अपील की है कि सबका प्रयास भी महत्वपूर्ण है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ, तो एक दृष्टि से इसका एक प्रतीक रूप था। श्रीमान जयराम रमेश जी ने, अभी वो यहाँ उपस्थित नहीं है, मगर मेरे प्रस्ताव का विरोध करते हुए 2 बिंदु मुख्य रूप में कहे थे। एक बिंदु ये था कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है, इसके अध्यक्ष पद के प्रति उनकी कल्पना ये थी कि जैसे शायद परिनियों में कहीं उल्लेख है कि प्रोफेशनल व्यक्ति की विशिष्ट, जिसको एकेडमिक बैकग्राउंड हम कहेंगे, ऐसी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को इसमें नियुक्त किया जाना चाहिए। और वो कटाक्ष ये कर रहे थे, यद्यपि ये कहते हुए कि श्री तरुण विजय, जो इस सदन के पूर्व में सदस्य थे और अभी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष है, उनके प्रति सद्भावना रखते हुए भी उन्होंने कहा कि शायद एक प्रोफेशनल व्यक्ति की नियुक्ति होना उपयोगी था। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वैसे प्रोफेशनलिज्म की व्याख्या भी काफी व्यापक होती है। आज हम देखते हैं कि IAS अधिकारी कल अगर शिक्षा विभाग के सचिव है तो आज एकदम से स्टील विभाग के सचिव बन जाते हैं। ये तो व्यवस्था में है। तो एक जनरलिस्ट अप्रोच भी कई बार रहता है और श्री तरुण विजय जी की जो पृष्ठभूमि है उसको देखते हुए उसमें कुछ आपत्तिजनक है ऐसा मुझे नहीं लगता। और फिर जो काम श्री तरुण विजय जी ने विगत 1.5 साल में किया है वो भी मैं मानता हूं कि सदन के सम्मुख लाना उपयोगी रहेगा कि उल्लेखनीय काम है, क्योंकि कुल मिलाकर नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का एक काम होता है कि हेरिटेज बायलॉज जो होते हैं उसको बनाना, और ये काम बरसों से अटका हुआ था, आगे नहीं गया था। और उन्होंने ये हेरिटेज बायलॉज बनाने का और जो मॉन्यूमेंट्स है उनको कैटेगराइज करने का जो काम होता है, 918 मॉन्यूमेंट्स को विगत लगभग 2 सालों में उन्होंने ये काम किया है। इसका दायरा भी बढ़ाया है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी सामान्यतः जो पुराने खंडहर या पुराने वास्तु, पुरानी हमारी इमारतें, इनके बारे में देखती थी, मगर कई बार हमारे समाज में जो हमारे सिख बंधु है या जू संप्रदाय के लोग हैं, जैन या बुद्धिस्ट है, इनके इतिहास से संबंधित जो विरासत के स्थान है, हेरिटेज के स्थान है, जो मॉन्यूमेंट्स है, इनकी उपेक्षा हुई थी। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि ये उपेक्षा अभी समाप्त हुई है। साथ ही साथ जो राखी गढ़ी का एक्सकवेशन हुआ है और तरह तरह के नए विषय जो सामने लाए जा रहे हैं, उसमें भी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की एक भूमिका रही है, जिसका नेतृत्व श्रीमान तरुण विजय अभी कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि उनकी नियुक्ति के प्रति आक्षेप का कोई बहुत बड़ा मतलब है, ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो CSR का फंड है वो लोकल विषयों के लिए उपयोग में लाना चाहिए, ऐसी बात कही थी। और अच्छा है उन्होंने इस विषय को छेड़ा। हम भी यही कहते हैं कि लोकल जरूर लाया जाए, क्योंकि देश में ये जो हमारे धरोहर के स्थल है, विरासत के स्थल है, वो हर जगह है। ऐसा नहीं कि वो विशिष्ट जगह पर है।
और मैं उदाहरण देता हूं कि बहुत सारी कंपनियों के कार्यालय मुख्यालय मुंबई में है और मुंबई के आसपास महाराष्ट्र में भी इन दिनों किलों की जो दुर्दशा है और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर राजनीति करने वालों के राज में ही ये उपेक्षा चरम सीमा पर पहुंची है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्यों मैं इस विषय का आग्रह रख रहा हूं। जैसे हम देखते हैं कि मुंबई महानगर में एक माहिम का किला है, माहिम तो बहुत निकट है और माहिम के किले पर माहिम, थोड़ा साहस रखिए ना प्लीज, थोड़ा टॉलरेंस। माननीय प्रियंका जी, तो जो ये माहिम का किला है अध्यक्ष महोदय, तो ये माहिम के किले पर बाकायदा एक खाटी खाना चल रहा था और वहां पर जानवरों की कत्ल खुलेआम होती थी। ये तो अच्छी बात है कि इतिहास के कुछ अध्येताओं ने और इन विरासत और हेरिटेज बिल्डिंग्स के बारे में चिंता करने वालों ने ये बात महाराष्ट्र सरकार के सामने लाई, तो अभी वो कुछ बंद हुआ है, मगर वहां पर अभी भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स जो गलत तरीके से अवैध तरीके से किले का कब्जा लिए हुए हैं। आप एक बार जाकर देखिए महोदया, आप जाकर देखिए, आपका ज्ञान थोड़ा सीमित है, मैं आपके ज्ञान में थोड़ा वर्धन करना चाहता हूं। तो ऐसी सारी स्थिति है, कहीं प्रार्थना स्थल बने हैं, कहीं मस्जिदें बनी हैं, कहीं मजहर बनाई गई है। तो ये सारा योजनाबद्ध तरीके से, रायगढ़ का समाचार बीच में आया था कि कैसे रायगढ़ किले पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी का किला है, वहां पर भी इस तरीके का एक गलत काम वहां पर हो रहा है, जिसको रोकने के बारे में प्रयास हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये प्रयास सफल भी हो जाए और ये बताने के लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे उदारमनस्क थे, ऐसे सारे अवैध जो काम हो रहे हैं उनको प्रश्रय देने की एक बहुत घिनौनी रणनीति आज की महाराष्ट्र की सरकार वहां पर अपना रही है, जिसका जितना निषेध हम करें, जितनी निर्भत्सना हम करें कम है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर मुंबई की जो कंपनियां हैं, इनको अगर इस विषय में काम करने के लिए हम अवसर देते हैं, तो मैं मानता हूं कि ऐसे अवैध काम जो वहां पर हो रहे हैं उसके बारे में निश्चित रूप में कुछ न कुछ हम कर पाएंगे। आज महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 60 ऐसे किले हैं जो केंद्र सरकार के सुरक्षा में है, 47 किले हैं जो राज्य सरकार की सुरक्षा में है और दुर्भाग्यवश राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण इन किलों के ऊपर ऐसे अवैध कामों की एक के बाद एक लगातार बहुत सारे उदाहरण सामने आ रहे हैं, जिसकी प्रति जितनी गहरी चिंता हम व्यक्त करें, मैं मानता हूं कि कम है। मान्यवर, इस बिल के बारे में बात करते समय इस सदन में उपस्थित बड़ी विद्वान कानून की जानकार श्रीमती अमी याज्ञनिक ने भी कुछ बिंदु रखे थे और उन्होंने कहा था कि सीएसआर का उपयोग तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, तो आप क्यों मॉन्यूमेंट की सुरक्षा के लिए सीएसआर के पैसे के बारे में वकालत कर रहे। मैं माननीय सदस्य को यहां पर विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कल्पना है उसमें संस्कृति का विकास भी आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट में आइडेंटिटी भी आती है। आखिरकार अगर हम अपने आप को भारतीय कहते हैं तो भारतीय कहने के कुछ एक बिंदु है, कुछ मान बिंदु हमारे हैं और इसमें हमारे ये धरोहर के सारे स्थल आते हैं, हमारी परंपरा से जुड़े हुए, इतिहास से जुड़े हुए ये सारे स्मारक स्थल आते हैं। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट से ये विपरीत है, ऐसा मानने की गलती हम न करें, ये मेरा आपको निवेदन है। आदरणीय उपसभापति जी, मुझे ये भी सुझाव दिया गया माननीय सदस्य से कि ये इसके लिए बिल लाने की क्या जरूरत है, ये तो छोटा सा विषय है, आप प्रधानमंत्री के पास जाइए, उनको प्रार्थना करिए और उनको कहिए कि थोड़ा धन आवंटन करिए। मैं बताना चाहता हूं कि ये तो बात होती है। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए जो बजट है वो सरकार ने बढ़ाया है, मैं सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं और हम प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत अच्छे तरीके से संवाद भी करते हैं। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं कि आप प्रधानमंत्री के साथ या नेता के साथ बोल रहे हो और नेता कुत्ते को बिस्किट खिला रहा है, ये स्थिति हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ पूरी सुनवाई होती है और पूरी सुनवाई के साथ हमारी बात को गंभीरता से ले जाने की हमारी पद्धति है, इसलिए वो तो बात सही है। और इसमें और भी एक बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो इतिहास के बारे में एक दृष्टि अपनानी होती है ना, उसमें नए नए मॉन्यूमेंट भी बनाना जरूरी होता है। कई बार मुझे अचरज होता है उपसभापति महोदय कि हमारे देश में 15 प्रधानमंत्री हुए, मगर जिनके जन्मदिन राष्ट्रीय उत्सव के रूप में या त्योहार के रूप में या किसी आयोजन के माध्यम से मनाए जाते हैं, ऐसे केवल 3 प्रधानमंत्री हैं। माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदर है सबको,
उनका जन्म दिवस हम बाल दिन मनाते हैं। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस है, उसको भी हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। राजीव गांधी के जन्म दिवस को भी हम मनाते हैं। बाकी प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन नहीं थे, किसी का जन्मदिन नहीं मनाते हम। अटल जी का जन्मदिन हमने पार्टी में शुरू किया, बाद में सरकार ने लाया। आप पीवी नरसिंह राव को तो भूल जाते हैं। उपसभापति महोदय, बताना चाहता हूं, सीट पर बैठकर आप ना बोलें, आप सब लोग प्लीज। नो, उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि श्री पीवी नरसिंह राव इस देश के इतिहास में उनका स्थान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, सिर्फ माननीय सहस्त्रबुद्धे जी की बात रिकॉर्ड पे जा रही है। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। जब उनका निधन हुआ तो उनका अंत्य संस्कार यहाँ करने के बारे में आपत्ति जताई गई। उनके परिवार को वहाँ तेलंगाना में जाकर उनका अंत्य संस्कार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ अंत्य संस्कार करते थे तो उनके समाधि बन जाती थी, जो समाधि कुछ चंद लोगों को नहीं चाहिए थी। ये बात है, इतनी संकीर्णता है यहाँ पर। और इसलिए अगर नए मॉन्यूमेंट बनाने हैं तो उसके लिए भी हमें और आवंटन की जरूरत होगी। हमने यहाँ वॉर मेमोरियल बनाया, आपने तो कुछ नहीं किया। हमने यहाँ पुलिस मेमोरियल बनाया, आपने तो अरे एक युद्ध का बनाया। अरे केवल एक युद्ध के जवानों के प्रति भावना का अभिव्यक्तिकरण उपयोगी नहीं है। सारे जवान जो भी देश के लिए बलिदान किए हैं, सबके प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना है। आपका जैसा सिलेक्टिव अप्रोच नहीं है। हमने, उपसभापति महोदय, नेशनल रिकॉग्निशन का भी हमने डेमोक्रेटाइजेशन किया है। हमने कभी अंतर नहीं किया। हमारे लिए सारे दिवंगत प्रधानमंत्री उतने ही माननीय हैं जितने कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। और इसलिए सभी प्रधानमंत्रियों का वस्तु संग्रहालय बन रहा है, हम सबको पता होगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो एक डेमोक्रेटाइजेशन की बात है, हमारी संस्कृति की सुरक्षा की बात है, हेरिटेज और हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त मॉन्यूमेंट्स है, उनकी सुरक्षा के लिए यह कहना जरूरी होता है। मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा लंबा बोलने की मुद्रा में नहीं हूं, आवश्यकता भी नहीं है, मगर हम सब जानते हैं कि देश की पहचान जो है वो एक अपने आप में देश का एक अस्तित्व रखती है। अगर हमारे देश में, आप में से कई लोग विपक्ष में है, यहां पर है, तेल अवीव गए होंगे इजराइल की राजधानी, या चाइना गए होंगे बीजिंग में, तो बीजिंग जाओ, तेल अवीव जाओ, आपको ध्यान में आता है कि बीजिंग में It is the chairman. You are not on the chair. Please keep quiet. Please. No, you are not supposed to speak. It's not going on record. Please. जब हम बीजिंग में जाते हैं, उपसभापति महोदय, सीट पर बैठकर ना बोले है कि अभी हम कुछ माननीय चेयरमैन ने सबसे पहले अमेरिका में गए आपके लिए किस तरह से बिहेव करना चाहिए अभी बताया। प्लीज, राज्यसभा के रूल्स प्रोसीजर में जो बिहेव है उसको फॉलो करिए। प्लीज, यू आर नॉट देयर टू डिसाइड। उसके लिए आप डिसाइड करने को नहीं है यहाँ पर। बैठे आप, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। इनको आपत्ति क्या है जी? अगर ये स्थिति होगी, एक दूसरे को आप डिस्टर्ब करेंगे, नहीं चलेगा। बैठ जाइए। आपत्ति क्यों है? आप बैठ जाइए। मान्यवर, बैठिए। मैं ये कह रहा था कि हर शहर की पहचान होती है। आप बीजिंग जाते हैं तो आपको ध्यान में आता है कि शायद आप मांडारिन अमेरिका में है। तेल अवीव जाते हैं तो लगता है कि आप हिब्रू अमेरिका में है। दिल्ली में और मुंबई में ये आपको नहीं लगता, क्योंकि हमने अपने देश की पहचान, अपने शहरों की पहचान, यहाँ की जो ऐतिहासिक संपदा है उसकी पहचान कायम रखी है। और इसके लिए भी CSR के बारे में ये होना जरूरी है। मान्यवर, भारत की जो सौम्य संपदा है, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, उस संदर्भ में इस तरीके का एक प्रबंधन होना, इस तरीके की एक योजना होना कि CSR का पैसा हम इन वास्तुओं की, इन इमारतों की रक्षा में खर्चा किया जाए, ये बहुत जरूरी है। मगर जो इस संदर्भ में चर्चा हुई, उस चर्चा का जवाब देते समय माननीय मंत्री महोदय जी ने जो अपनी भूमिका रखी, और सबसे महत्वपूर्ण कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बढ़ाया हुआ बजट, मणिपुर जैसे हमारे उत्तर पूर्व के राजधानी के मणिपुर शहर के, मणिपुर के इम्फाल के निकट रानीमा गाइडिंग लू के नाम से एक स्टेशन बनाया जाना, और विभिन्न स्टेशंस को भी हमारी विरासत और हमारी धरोहर के अनुरूप नाम देने का एक प्रस्ताव सरकार के द्वारा आगे किया जाना, ये जो बहुत अच्छे सराहनीय
और प्रयास इस सरकार के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त हो रहे हैं, वो देखते हुए मेरे प्रस्ताव का जो भाव है वो सरकार ने समझा है। मैं सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपना ये प्रस्ताव पीछे लेता हूं। बहुत धन्यवाद। Dr. Vinay P. Sahasrabudhe, are you withdrawing the bill or should I put the motion to vote? Are you withdrawing? Yes, withdrawn. So the bill has been withdrawn. Okay. The Population Regulation Bill 2019, Sri Rakesh Sinha to move a motion for the consideration of the Population Regulation Bill 2019. सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज ये अवसर आया है, जिस अवसर की प्रतीक्षा पूरा देश और स्वयं भारत का संसद करता रहा है। इसी संसद में लगभग 40 बिल पेश किए गए हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स, जिसका संबंध जनसंख्या नियंत्रण से है। मुझे खुशी है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके सदस्यों ने पॉपुलेशन नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्राइवेट मेंबर बिल नहीं दिया। यह दिखाता है कि देश के आम लोगों में और चुने हुए प्रतिनिधियों में इस विषय की संवेदनशीलता है। सभापति महोदय, हम सब आंकड़े जानते हैं कि देश की जनसंख्या क्या है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, हम सुपरिचित हैं। 1901 से लेकर 2011 तक की में जनसंख्या की कितनी वृद्धि हुई है। 110 करोड़ जनसंख्या बढ़ चुकी है। जब जो जनसंख्या 1901 में थी तब तो हम अनडिवाइडेड इंडिया थे, तो हमारे पास जमीन भी अधिक था, पानी भी अधिक था। आज हमारे पास 17% से अधिक जनसंख्या है दुनिया का, 2.4% लैंड है, 4% पानी है। इससे आम लोग स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, मॉल हो, जहां भी जाते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या की परिणामों को स्वयं अनुभव करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं जनसंख्या अपने बिल पर आने से पहले एक बात बताना चाहता हूं। दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे विमर्श को जानबूझकर, सोच समझकर भटकाने की कोशिश होती रही है, जिससे उद्देश्य पूरा न हो। मैं 3 एकेडमिशियन का नाम लूंगा, रोजर जेफरी और पैट्रिशिया जेफरी ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक आर्टिकल लिखकर जनसंख्या नियंत्रण के जो कानून हैं, उसी तरह से मोहन राव, पीके दत्ता, ये सब बड़े एकेडमिशियंस हैं। जनसंख्या नियंत्रण को रोकने की पूरी बहस को एक शब्द दिया गया, सैफरन डेमोग्राफी। मैं नहीं समझ पाता हूं कि वो सैफरन डेमोग्राफी क्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन संकीर्णताओं से उसी तरह से ऊपर उठे जिसका आगाज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए 2020 में कहा था। जनसंख्या और संसाधनों के अनुपात को देखते हुए हमें विचार करना चाहिए। अर्थात देश का जो संसाधन है, जिस संसाधन से अपने लोगों का हम पेट भर सकते हैं, जिन संसाधनों के आधार पर हम लोगों की डिग्निफाइड लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, उस आधार पर जनसंख्या के बारे में हमें सोचना चाहिए। संभवतः एक लंबे अरसे के बाद जनसंख्या के विमर्श को प्रधानमंत्री जी ने उस संकीर्णताओं से बाहर लाकर एक सेकुलर डोमेन में रखा है, जिसमें संसाधन है, जन्म दर है, हमारा जीवन पद्धति है। मैं उसी पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सभापति महोदय, 1996 में जनसंख्या और संसाधनों के अनुपात को नापने के लिए एक नया फॉर्मूला आया, जिसे पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। वह है ग्लोबल हेक्टेयर। ग्लोबल हेक्टेयर का तात्पर्य है कि जो लैंड और वाटर, यानी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव संसाधन है,
वह प्रति व्यक्ति कितना है, इसको ग्लोबल हेक्टेयर कहा गया। दूसरा शब्द है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जिसका तात्पर्य होता है कि संसाधनों पर जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हमारे जीवन पद्धति में, लाइफ स्टाइल में जिसकी हमें आवश्यकता होती है, वह कितना है। तो आज भारत को जो उपभोग होता है वह प्रत्येक व्यक्ति 1.2 ग्लोबल हेक्टेयर है। एक तीसरा शब्द है बायो कैपेसिटी, जो संसाधन हमारे पास है वो कितना संसाधन उपभोग करने के बाद पुनः पैदा ले लेता है, यानी रीजनरेट होता है। रिसोर्सेज गेट रीजनरेटेड ऑटोमेटिकली, वो हमारे पास 0.43 है। यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो हम उपभोग करते हैं, उपभोग जिन चीजों का करता है उनका जो पुनरुत्पादन हो जाता है, उसके बीच का गैप 187% है। यानी हम इकोलॉजिकल डेटर है। और यदि यह पद्धति 30 वर्षों तक चली रही तो हमारे संसाधन इतने कम हो जाएंगे, चाहे विकास की प्रक्रिया जितनी भी तेज हो, कि हम अपने लोगों को वह चीजें नहीं दे पाएंगे जो डिग्निफाइड लाइफ के लिए। एक और दूसरी बात है, जब दुनिया की जनसंख्या 5 बिलियन क्रॉस हुई तो लगभग 1700 साइंटिस्ट इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा था कि दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी। लेकिन भारत में जनसंख्या विमर्श पर एक दूसरी बात कही जाती है। पहले तो संकीर्णता की बात, जो मैंने कहा, सैफरन डेमोग्राफी के नाम पर सांप्रदायिक क्षेत्र में ले जाकर इस जनसंख्या विमर्श को हास्य पर ले जाया जाता रहा। जब प्रधानमंत्री जी ने उसे बाहर निकाला, अब मैं एक दूसरी बात पर आना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि बहस में कुछ लोग हैं जिनको बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत कम नजर आती है, जिनको बढ़ती हुई जनसंख्या से डेमोग्राफिक डिविडेंड नजर आता है कि हमारी 65% जनसंख्या 35 साल से नीचे है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ले। क्या डिविडेंड ले? कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हमारे लोग, सऊदी कंट्रीज में हमारे लोग जाके मजदूरी करें? क्या वो आपको राष्ट्रपति बनाएंगे? वहां पर बनाएंगे? क्या वो आपको बड़े बड़े पदों पर बैठाएंगे? मुट्ठी भर लोग बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, बाकी लोगों से कहते हैं कि वो बाकी जगह पर मजदूर नहीं है, डिविडेंड लाओ देश के लिए। कोई भी सभ्य देश बाहर की उस मजदूरी की आमदनी पर अपने नागरिकों को नहीं छोड़ता है। हम रोजगार के लिए कहीं जाते हैं तब जब देश में इसकी कमी होती है, और जनसंख्या के डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पर इसको भटकाया जा रहा है। इसका एक दूसरा मैं बताना चाहता हूं, दुनिया की बहुत सी मल्टीनेशनल कंट्री हैं, इस जो पूंजीवादी व्यवस्था के घोर समर्थक हैं, उनको सस्ता मजदूर चाहिए। उन्हें पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, जिसे तृतीय विश्व के देश वो कहते रहे, डेवलपिंग कंट्रीज कहते रहे, उन्हें सस्ते मजदूर के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, कि पूरे विमर्श को, पूरे डिस्कोर्स को वे भटकाने की कोशिश करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पर। एक तीसरा जो जनसंख्या नियंत्रण को रोकने पर एक बार बार बात आती है, वो बहुत ही रैशनल बात है कि हम जनसंख्या में रिप्लेसमेंट लेवल, अर्थात हमारे दो की स्थिति में पहुंच रहे हैं। जो परंपरागत हमारा अध्ययन का तरीका है, यदि उसे देखें तो सचमुच में हमारे रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है, वहां हम पहुंच रहे हैं। जो नारा एक समय 1970 के दशक में उस समय की कांग्रेस सरकार ने दी थी, हमारे दो परिवार नियोजन, परिवार कल्याण का कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन अपनी ईमानदारी नहीं होने के कारण, प्रतिबद्धता नहीं होने के कारण, या तो आपातकाल में लोगों के साथ ज्यादती की गई, और मुझे कहना पड़ रहा है कि 75 के दौरान 1975-76 में यदि लोगों के साथ वह आक्रामक ज्यादती नहीं होती कि बच्चों को पकड़कर उनके फैमिली प्लानिंग में बच्चों को लाया जाता था, शादीशुदा लोगों को लाया जाता था, जो एक तरह से भारत की जनसंख्या पर आक्रमण हुआ, भारत की सभ्यता पर, भारत के सभ्य लोगों पर आक्रमण हुआ। यदि वह नहीं होता तो संभवतः जनसंख्या पर कानून बनाने में, विमर्श में लोगों को डर नहीं लगता। उस 75-76 का जो भय है, जो घोस्ट है, वह आज भी हमें पीछा कर रहा है। तो मैं आना चाहता हूं कि रिप्लेसमेंट लेवल की बात कही जाती है। सभापति महोदय, जनसंख्या पर विमर्श, जनसंख्या पर शोध एक नए नए रूपों में हो रहा है।
परंपरागत शोध में टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात कही जाती थी। टीएफआर का डेफिनेशन है, एक महिला, एक मेरी मां और बहन अपने फर्टिलिटी की आयु में, पूरी आयु में, जो 14 साल से लेकर 49 साल तक एवरेज माना जाता है, एक वर्ष ऊपर नीचे लोग कह सकते हैं, लेकिन साधारणतः 14 ईयर्स से 49 ईयर्स का है, कितने बच्चों को जन्म दे सकती है औसत। यह टीएफआर का डेफिनेशन है। तो उस डेफिनेशन के अनुसार साउथ इंडिया के बहुत से ऐसे राज्य हैं जो भारत की एवरेज पॉपुलेशन से भी कम है या उसके बराबर है। यह सत्य है। और जो इंपावरमेंट इकोनॉमिक ग्रुप है, इंपावरमेंट एक्शन ग्रुप के 9 राज्य हैं जहां देश का 48% पॉपुलेशन रहता है, वो टीएफआर में एवरेज से ज्यादा है। उसी टीएफआर के दायरे में मैं देखूं, देश के 174 जिले जहां हम एवरेज राष्ट्रीय औसत के बराबर हैं, तो 72 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर टीएफआर 4 है। लेकिन मैं टीएफआर के पूरे अवधारणा को यहां खारिज करता हूं। आज सदन को मैं अपनी पूरी गंभीरता से, पूरी जिम्मेदारी से बात बताना चाहता हूं कि टीएफआर का पूरी अवधारणा क्यों गलत है। और मैं जिन आंकड़ों का उपयोग कर रहा हूं वो भारत के सेंसस कमीशन ने पिछले 20 साल से वो आंकड़े दे रहा है, लेकिन डिस्कोर्स में राजनीति आने के कारण, संकीर्णता आने के कारण सेंसस कमीशन के उस आंकड़ों को लोग गौर नहीं कर रहे। और जो विमर्श पर ऐसे ताकतें हावी हैं, जो सैफरन डेमोग्राफी के नाम पर हावी हो जाते हैं, वे उन आंकड़ों को सामने नहीं आने देते। सभापति महोदय, यह पश्चिम के द्वारा टीएफआर बनाया गया है, वो ठीक भी है। हर देश, हर सभ्यता अपने अनुभवों से, अपनी परंपराओं से अपने मानक तय करता है। तो मानक क्यों नहीं तय होगा? एक महिला 14 साल की आयु में या एक महिला 49 साल की आयु में कितने बच्चे को जन्म देती है, तो मानक वैज्ञानिक ही है। तो उस मानक से मैं अलग हटकर कहना चाहता हूं कि एक है टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, टीएमएफआर। टीएफआर उनके लिए उपयुक्त क्यों है, इसका मैं कारण बताना चाहता हूं। ओईसीडी, हम सब जानते देशों का एक ग्रुप है। ओईसीडी के 11 देश ऐसे हैं जिसमें चिली है, जिसमें डेनमार्क है, जिसमें आइसलैंड है, जिसमें इटोलिया है, जिसमें नीदरलैंड है, जिसमें नॉर्वे है, जिसमें फ्रांस है, स्लोवेनिया है। उन देशों में विवाह से पूर्व हमारी जो वहां की मां और बहनें हैं, जो बच्चों का जन्म दर है वो 50% से अधिक है। पोलैंड में 60% है। अमेरिका में उन बच्चों जो अनमैरिड मदर्स के द्वारा पैदा हुए बच्चों की संख्या 40% है। इंग्लैंड का मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि मैं इंग्लैंड को एक ऐसा देश समझता था जो कि तुलनात्मक रूप से कंजर्वेटिव कंट्री माना जाता है। वहां 2019 में 3 लाख से अधिक बच्चे मैरिड मदर से पैदा लिए और 2 लाख से अधिक बच्चे अनमैरिड मदर से पैदा लिए। इन कारणों से टीएफआर उचित है। चाहे यूरोपियन नेशंस के देश हों, यूरोपियन नेशंस के देश में वे बच्चे जो अनमैरिड मदर से पैदा लेते हैं उनकी संख्या 50% से एवरेज ऊपर है। तो अमेरिका 40%, इंग्लैंड 47%, ओईसीडी कंट्री 50% प्लस, चिली में तो 69% है। तो कुछ कंट्री तो ऐसे है जहां 71% है। तो इसलिए टीएफआर का कंसेप्ट उनकी अपनी परंपरा के अनुसार, मैं उसको कंडेम नहीं करता हूं। हर देश की अपनी परंपरा होती है, जीने की शैली होती है, जीने की पद्धति होती है। भारत में मैं उन आंकड़ों को ढूंढ रहा था कि हमारी मां और बहनें विवाह से पूर्व कितने बच्चे पैदा करती हैं। मैं ढूंढता रहा, परिश्रम करता रहा, पुस्तकालय से लेकर गूगल सर्च तक जाता रहा, मुझे कोई आंकड़ा नहीं मिला। कुछ आंकड़े हो सकते हैं लेकिन वे आंकड़े अभी रजिस्टर्ड नहीं है। वो आंकड़े होंगे भी तो 0.001% के आसपास होंगे। इसलिए भारत में जो
सेंसस कमीशन ने एक फॉर्मूला निकाला है, टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, अर्थात विवाह के बाद एक महिला अपने आयु में फर्टिलिटी रेट के दौरान कितने बच्चों को जन्म देती है। तो मैं वो कुछ आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूं। उसके आधार पर भारत की फर्टिलिटी रेट वास्तव में, यदि मैं एक साधारण शब्दों में कहना चाहता हूं, एक बच्चा 7वीं क्लास तक 0 अंक लाता है, 7 से 10वीं क्लास तक 90% अंक लाता है, एवरेज क्या निकलेगा? TFR वही है। आप उस डिल्यूजन में मत रहिए। मैं भारत में बताना चाहता हूं, बिहार में टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट 6.3 है, झारखंड में 6.1 है, मध्य प्रदेश में 5 है, छत्तीसगढ़ में 5.5 है, राजस्थान में 4.7 है, उत्तर प्रदेश में 6.8 है, उत्तराखंड में 2.8 है, उड़ीसा में 3.8 है, और इंडिया का टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट एवरेज 4.9 है। गांवों में 5.1 है। अच्छा, मैं अब दक्षिण के राज्यों का कुछ बताना चाहता हूं जहां कहा जाता है कि TFR कम हो रहा है। उसमें आंध्र में 3.4 है टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, कर्नाटका में 3.3 है, केरला में 5.1 है, तमिलनाडु में 3.7 है, केरल में 5.1 है और तेलंगाना में 3.6 है। चूंकि अन्य सदस्यों को बोलना है, मैं कंक्लूड करने से पहले 2-3 ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं, बाद में मैं बोलूंगा जब डिबेट समाप्त होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि बिल कानून का रूप ले। सभापति महोदय, वी शुड नॉट बी इन डेल्यूजन। एवरेज इज ऑलवेज डेल्यूजनरी। जिन सवाल है कि संसाधनों पर बोझ कितना है, एक फ्लाईओवर पर बनता है बोझ कितना है, एवरेज कितना, यह महत्वपूर्ण नहीं। हमारे मित्र मनोज झा जी के पास कितने बच्चे, अगर एक बच्चे हैं, मेरे पास 11 बच्चे हैं, एवरेज 6 आता है, लेकिन फ्लाईओवर तो उन 12 बच्चों का बोझ सह रहा है। उसे मनोज जी के 1 से हमारे 12 से कोई अंतर नहीं है। तो इस डिल्यूजन में नहीं रहना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण एक समाजशास्त्रीय विषय है और समाजशास्त्रीय विषय होने के कारण जो औसत वृद्धि के साथ साथ जो सामाजिक स्तर पर वृद्धि में जो अंतर है, जो भौगोलिक स्थिति में, रीजनल क्षेत्रीय स्थिति में जो वृद्धि का अंतर है, उन सब को हमें स्वतंत्र मन से, कि सदन कठोरता की मरुभूमि नहीं है, सदन तो बहस के लिए जीवंत एक हरियाली है, जहां पर हम अपनी बात ईमानदारी से देश के हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में रखते हैं। और अंतिम शब्द में कहना चाहता हूं, जिन संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है, बायो कैपेसिटी घटता जा रहा है। आप ध्यान रखिए, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए जो संसाधन था उसका उपभोग करके कहते हैं नहीं सब ठीक है। वी आर ईटिंग दी रिसोर्सेज मेंट फॉर दी पॉस्टरिटी, ये हमारा अधिकार नहीं बनता है। इसलिए पीढ़ियों को देखते हुए, देश की स्थिति को देखते हुए, देश की भावना को देखते हुए, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से कहा था, उसी कारण से मैं भी संयमित हुआ। डिस्कोर्स में मेरे भी कई आयाम थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि संसाधन और लोगों के अनुपात को देखो, उसी आधार पर अपने निर्णय करो। ये निर्णय जितना मेरे हित में होगा उतना आपके हित में, जितना वर्तमान में होगा उतना भविष्य के लिए होगा। और इस बिल में मैंने प्रावधान दिया, वो कॉलेज स्कूल के लिए कैंपेन करेंगे, इसलिए कि कोई माँ और बहन यदि प्लीज, यह मैं आपको जस्ट सिर्फ आपके ध्यान में लाने के लिए, अभी हम लोग राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे चर्चा कर रहे थे। नियमितः बहस शुरू होने के आधे घंटे पहले तक आप नाम भेज सकते हैं। आज तक लोग नाम भेज रहे हैं, इसलिए अगर आप इस पर बोलना चाहते हैं अब्दुल वहाब जी, तो आप प्लीज नाम भेज दीजिए। निश्चित तौर से मौका लिखकर आप भेज दीजिए नाम, जरूर मौका मिलेगा। डॉक्टर श्रीमती एमी याग्निक जी प्लीज। How many minutes? 10 minutes? टाइम है सर इसका कुछ? No time. हाँ बोलिए। Thank you, sir, for giving me this opportunity. It's very surprising that at a time when we are facing an unprecedented crisis the world over,
we are talking about human rights. We are talking about human development. We are talking about going to the Mars. And we are talking about seeing that every person on this earth gets whatever the person is entitled to be to merely by being a human being. A bill is moved by one of my colleagues here on population regulation bill. So we might be in competition with lots of countries the world over on many issues. But to try to bring some kind of controlling population in this world, I do not understand the rationale of the bill. It can be said that, well, if population is controlled, if there is birth control, there can be more use of resources, people will get more amenities, they'll be able to have a nice way of life, and the government will be able to provide sustainable development to the people of the society. Well, these are very good arguments to be made in support of the bill. But when a bill is brought with an ulterior motive, with some kind of motive that you want to control population, you want to have certain sections of the society, certain peoples of this world to stop giving birth to more children in the name of population control, in the name of giving them some more facilities, I think it does not stand on its feet. It crumbles because the very idea of human development, the very idea of giving human rights to people who are born as human beings gets totally shattered by this particular kind of a bill, sir. Sir, the bill says that, well, there will be incentives, there will be benefits, incentives given to people working in the public sector, people working in the private sector, and there will be benefits to people who would go for 1 child, 2 children. But sir, what is all this about in the end? All these incentives and all these benefits the bill is talking about somewhere points to the inefficiency of the governance model. Is the government of the country unable to provide sustainable growth, sustainable development? It cannot handle its own population? What is this meant for? If you are trying to segregate sections of society by bringing majoritarian view in this particular bill, a minority view, I think that doesn't serve the purpose, because we are bound by the Constitution of this country. The Constitution has given several fundamental rights and directive principles of state policy, and it is for the government to decide what it would be doing for its own people. But a private bill that has come today has opened my eyes, and I'm sure it will open the eyes of all the people sitting here who are bound by the Constitution of this country. Ultimately, it narrows down to human development. Ultimately, it narrows down to what you are giving to the people. You are not able to give, so you snatch away what the person has. We are, sir, discussing surrogacy bill. We are discussing designer babies, because today we talk about single parents having babies of their own. We are talking of a world where we have LGBTQ rights we want for the human beings, whether they can have children or not, whether they have right to the reproduction of human beings. And here is a bill that is talking about going against nature. Sir, we live in a country which has a history of thousands of years. We have a history where we consider the children as our resources in a sense. They provide the love their parents want in their old age. But what we see, sir, on one hand, there is not a word in the object and reasons or the motive to bring this bill. What are we doing with our children on the streets, abandoned children,
children in shelter homes, children in remand homes, children in juvenile homes? Has there been any bill to say that yes, we will care for these children, and because of this situation we need to enlighten and bring awareness to the citizens of this country that there should be some kind of a population control? That can be a milder way to put it. But you have ignored the wide section, the class of the people in this country, and that is the children, the vulnerable class. Sir, they are entitled to rights, they are entitled to entitlements. But a newborn child on the street, an abandoned child on the road, put on the temple streets. We are in India, we talk about Sanskriti, we talk about duties, we talk about our Mahan Sanskritis and lineage, but we find day in and day out small babies put in the cradles on the church floors, on the temple, abandoned children. Are we giving these children their due? We are talking of not bringing children in this world by this population control bill. So are you going against nature? Are you going to stop human development? Are you going against the human rights of being born? You're talking about this kind of a philosophy in a bill where you are totally unable to show that yes, this government has failed. The present governance model has failed. It cannot look after its population. And so there should be control on the population. Is this the motive? Is this the thrust of the bill? I'm asking myself, is this the way you talk about the people of your own nation? That okay, if you have one child or you have two children, you will be able to give better education, you will be able to give them better resources, you will be able to give them a better life. Who promises that? Supposing the bill is passed, who promises them these facilities? Sir, the pandemic has shown us stark nakedness that we have been unable to even bring those children and students who have been out of the system because of the pandemic to re-enter the education system. We do not know the ratio of dropout. We do not know how many girl children have stopped going to school because of non-security or safety reasons. We have not been able to see that we create digital infrastructure to give education to these children, and we have not been able to say that yes, today our healthcare system is there, and so we'll be able to provide for the people of this country. Sir, two more issues I would like to say. That what would you say to people who would start going for sex selection? Because in a country where you want male child and you are trying to bring population control bill, are you going to start bringing criminal angle in the whole thing by bringing this bill? Sir, this population control bill is totally not required and should not have been brought by my learned colleague. With whatever intention he has brought this population control bill, he should have concentrated on seeing that the resources of this country are geared towards human development. The current situation should be that the government should make itself so strong, so capable, so efficient that it uses the resources for the existing population rather than talk about bringing curbs on population bill. And on a lighter tone, he should have put two more things. I know this bill is never going to be passed, but two things. He has not mentioned about already people who have got 5 children, 7 children. And he has not talked about that there should have been an incentive or there should have been an embargo, that those who have not married and don't have children cannot come in public life. You should put that. This is a lighter tone. So when you talk about population control bill, you should have a holistic approach when you put objects and reasons. So I say that this is absolutely a misplaced bill. You should have thought before bringing the bill. Thank you. Should not be entertained. Thank you. Professor Manoj Kumar Jha, not present. Dr. Fauzia Khan ji. Lok Sabha, not present. Shri Abdul Wahab ji. Thank you, sir. When I heard Madam Doctor's address, actually I am not supposed to stand here because everything she told. Only one thing I want to mention about me, especially Rajiv. I am second among 9. Second son. After that, according if this law passed before me, 1951,
After me, no brothers, no sisters. Okay. But for me, now 4. It is according to criminal. 4 boys. For my boys, now only 2, as per bill. It is not by force, not by law. It is because of, okay, whoever government came before, their family control, teaching us about family, population control, and how to give them more education. We agree on that, but not by force. They have to, the government has to educate our generation, not by bill, by force, incentives. One of my Kerala's priest was giving incentive for producing more than 5. Whoever, one priest in Kerala, he was publicly addressed that any family who is producing more than 5 will get incentives in their colleges, they'll be giving something extra 5,000 rupees also. So these are all ulterior motives. I am not deliberating on Madam's address. But as I am telling Mr. our good friend, learned friend, Rageshji, this is not by force. Okay, of course. If he is focusing my community, Muslims, why they are producing more before or now also? No jobs other than what to do? There should be some job, some education to provide that sort of facilities to the unprivileged people. Automatically it will get reduced. I am not for making 10, 15, 20, not just like my father me, not just like me, my kids. Why? I am self, we all know what is happening. From the same community all this happen. If this is to control Muslims or whoever it is, ulterior motives you are not telling openly. I am telling my Rageshji, this government, BJP government, let them give education to the unprivileged, uneducated, unemployed people. There will be some other job rather than making hits. So I urge upon government and Rageshji to give more facilities, especially minorities. Now this government is doing, I am not denying. Yesterday in my speech, I appreciate the skill development program by this government. Skill development program. I am also running this skill development. I got 18 crores from the Ministry of Minorities and Waqf to establish skill development park in our college and all. I agree, I appreciate. Instead of doing this one, don't concentrate on the other part. That is why I request Rageshji to withdraw the bill and give more importance to educate the people, those who are producing more. That is my request. Thank you very much, and I totally agree, Rageshji. I wish you withdraw the bill for the sake of the whole population of this country, especially because China is giving incentive to make more. And our strength in India, not just like sending what you call only laborers to girls and all, no. Strength is young people. Yeah, now the government is saying young people, young energetic Indians are there for any job, not just like before, only tea operators. Suleimani operators, no. Now people are going from here, skilled people, making more money to foreign remittance, only because of this extended family or whatever you say. So don't restrict to maybe you are having, I don't know how many kids you got or how many kids your father got. Our Prime Minister is not having even one. So please, Rageshji, please excuse me. You too, you got 2. That is why. That is why you are telling 2. If you are having 4, you will be telling 4. I got 4, but I feel I am very bad. I am not having a single girl. I tried my level. My wife told no. No, I encouraged my wife told enough is enough. And Thank you. So I got now 3 granddaughters. Thank you very much. Thank you. Dr. Vikas Mahatme ji. Dr. Vikas Mahatme. Thank you, Chairman, sir. Mic on. Just Mahatme sir. Mani Mantri ji.
Sir, Rule 238, Sub-Rule 2, whenever any member speak, not speak personally. It is not dignified for the member of parliament. So whatever the says by the member, according to the Rule 38, Sub-Rule 2, it's a personal. It must be deleted from the law. I withdraw. We'll examine it. Whatever should not be there, shouldn't be there. Dr. Mahatma Ji. थैंक यू चेयरमैन जी। मैं धन्यवाद दूंगा राकेश सिन्हा जी को, जो ये एक महत्वपूर्ण बिल उन्होंने लाया है। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, ये पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल है और इसकी बहुत जरूरी है, वो उन्होंने भी बताया। लेकिन मैं भी फिर से दोहराना चाहूंगा कि इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड के हिसाब से 17% है और सरफेस एरिया, जो ग्लोबल सरफेस एरिया जो है उसका 2.47% है। यानी हम 17% पॉपुलेशन 2.47 सरफेस एरिया जो भी है या भूपृष्ठ है उस पर हम निवास कर रहे हैं। हमारे रिसोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। और यह सरकार का काम है कि लोगों को अच्छा डिग्निफाइड वे ऑफ लाइफ यदि होना है तो वो गाइड करे कि किस तरीके से योजनाएं बनाए जिस तरीके से लोगों को अच्छी लाइफ, क्वालिटी लाइफ जीने का अधिकार मिले, जो हम सब चाहते हैं। और यहाँ रिसोर्सेस में सिर्फ हम पानी की बात करें तो 4% ऑफ पोर्टेबल वाटर, यानी जो उपयोग में ला सकते हैं, ऐसा पानी हमारे पूरे यानी भारतवर्ष के लिए है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन रेगुलेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे संसाधन भी कम हो रहे हैं। दूसरा ये है कि इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर है, उसमें 18 पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर्स भी हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस का एक इंस्टीट्यूट भी है। और इनका यदि स्टडी हम देखते हैं, जो कि कोई पार्टी से जुड़ाव नहीं रहता है, इनके स्टडी से भी सबको पता चल जाएगा कि भारत में पॉपुलेशन रेगुलेशन की बहुत आवश्यकता है। तो इसके लिए काम करना जरूरी था और यह बिल उन्होंने लाया, इसलिए मैं उनको फिर से धन्यवाद दूंगा। यदि हम पॉपुलेशन रेगुलेशन के लिए कुछ नहीं करते तो हमारा जो है उसकी भी स्टडी हुई कि हम कितना पीछे जाएंगे। 13% पर कैपिटा जीडीपी जो है वो हमारा कम होगा, ये हमें समझना चाहिए। 12 लाख मैटरनेटल डेथ बढ़ेंगे, ये भी होता है, और 29 लाख इन्फेंट डेथ्स भी बढ़ेंगे। तो ये सबके लिए हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो, जितनी भी हम हेल्थ सर्विसेज में इनपुट्स देंगे उससे और बढ़िया हेल्थ सर्विसेज बढ़ेंगे। और 27,000 करोड़ रुपीस का खर्चा भी बढ़ेगा, यह हमें सोचना चाहिए। ये सिर्फ स्वास्थ्य के लिए कह रहा हूं मैं, तो बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए तो और होगा। इसलिए पॉपुलेशन रेगुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं बताना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो कम हो गया है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट वो भी कम हो गया है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो था वह 2015 में 35 था, वह अभी 28.3 पे आ गया है। इतना जल्दी हम इसको कम कर रहे हैं, यानी हेल्थ सर्विसेज से हम अच्छा काम करवा सक रहे हैं, ये सही है। लेकिन इसमें यदि हम पॉपुलेशन रेगुलेट करते हैं तो और ज्यादा फायदा होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन क्या है, यह भी सुनना बहुत जरूरी है, बहुत इसे महत्वपूर्ण भी है। उन्होंने नैरोबी में जो एक समिट हुई थी, जो कि कैरो में 25 साल पहले इसके ऊपर जो समिट हुई थी, इसके बाद में ये नैरोबी में हुई 25 साल के बाद में, 25 ईयर्स के बाद में, उसमें उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन रेगुलेशन जो हो वो स्वैच्छिक हो, वॉलंटरी हो, वो पूरे इन्फॉर्म यानी उसकी पूरी जानकारी देने के बाद ही वो उसका उपयोग हो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। और तीसरा ये जरूरी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो भी अवेलेबल है, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 चिल्ड्रन हम बोलते हैं, अंतर जो है वो बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अवेलेबिलिटी सबको हो और वो ज्यादातर फ्री में हो। तो ये जो उनका जो
कहना है, उनका जो विजन है, इसके लिए मुझे लगता है हम काम करेंगे तो पॉपुलेशन रेगुलेशन और ये बिल के जरिए पॉपुलेशन रेगुलेशन जल्दी से जल्दी ला पाएंगे। इसमें थोड़ा सा मैं सुझाव देना चाहूँगा, अमेंडमेंट भी चाहूँगा कि 2 बच्चों के बाद यदि हम किसी परिवार को दंडित करते हैं तो इसमें एक परेशानी है कि जो बच्चा पैदा होता है उसे हमेशा लगेगा कि इस देश में मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूं और यह देश के लिए बहुत हानिकारक विचार है। और इसलिए मैं कहता हूं कि दंडित करने के बजाय और कुछ कर सकते हैं तो वो बेटर होगा, क्योंकि कोई माँ बाप की गलती की वजह से कोई बेटे को उसका अपराध की शिक्षा हो या पनिशमेंट हो तो क्या हम ये सही मानेंगे संविधान के रूप से? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको दंडित करने के बजाय और कुछ उपाय योजना होना चाहिए। दूसरा इससे इम्पोर्टेंट ये है कि फीमेल फिटिसाइड्स बढ़ेंगे। फीमेल फिटिसाइड्स बढ़ेंगे इसलिए कि यदि दूसरा बच्चा यदि यानी फीमेल है या बच्ची पैदा होती है तो घर वाले ज्यादातर मैंने देखा है, डॉक्टर होने के नाते देखा है कि वो कहते हैं कि दूध मत पिलाओ, और वह धीरे धीरे डेथ हो जाती है लड़की की, और इसलिए क्योंकि उनको दूसरा लड़का चाहिए, तो ये नंबर भी बढ़ सकता है। और मुझे लगता है तो ये इसके लिए दोनों चीजों के लिए हम कोई और उपाय योजना करें। अभी तक के पॉपुलेशन रेगुलेशन के लिए काफी कुछ किया गया है। अभी फिलहाल 2016 में मोदी जी के अगुवाई में और माननीय जेपी नड्डा जी थे हेल्थ मिनिस्टर, तब मिशन परिवार विकास करके एक मिशन था जिसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें हाई फर्टिलिटी रेट है, जैसे कि 145 डिस्ट्रिक्ट्स वेर आइडेंटिफाइड, और उनमें उन लोगों तक के पहुंचने की कोशिश की गई और जारी है कि जिनको जरूरत है इसके बारे में जानकारी की, जिनको जरूरत है इसके बारे में कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिलने की, उन तक के पहुंचे। और यह टारगेटेड अप्रोच से हमें उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला और यह सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम पहुंच पाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी हम डिस्ट्रिक्ट तक के पहुंचे, और जैसे कोरोना में पहले हम डिस्ट्रिक्ट का ये रिस्ट्रिक्शंस करते थे, अभी हम फ्लैट स्कीम तक के पहुंचे हैं और फिर अकेला आदमी फिर उसको आइसोलेट कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हम जो टारगेटेड अप्रोच ले, जैसे स्लम एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, या जहाँ पर एजुकेशन की कमी है, ऐसे एरिया में जाकर ऐसे लोगों के पास जाए और उनको इसके बारे में जानकारी दे पॉपुलेशन रेगुलेशन के लिए, ताकि हम हर परिवार को समझाएं और वहां तक कि हम पहुंचे। और टेक्नोलॉजी के उपयोग से यह संभव है आज। तो मेरा कहना यह है कि एक भी परिवार ऐसा न हो कि जिसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में जानकारी ना होने की वजह से या वो ना मिलने की वजह से उसे बच्चा हो रहा है या वो बच्चा पैदा कर रहा है। ये यदि हम टारगेट लेते हैं तो यह सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि ये मिशन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है, बहुत अच्छे से चल रहा है। इसीलिए आज हम 2.1 के पास टोटल फर्टिलिटी रेट लेके आए हैं। इसके लिए और क्या क्या कर सकते हैं, तो ऊपर से हमें उन्होंने कहा है बिल में, बहुत अच्छी तरीके से बताया कि सेक्रेटरी अलग हो, डिपार्टमेंट अलग हो, इसके लिए फंड्स की सुविधा हो, और ये फंड्स यूटिलाइज होने के लिए नीचे आशा वर्कर से लेकर या जो भी अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं पैरामेडिक्स, उनको इंसेंटिवाइज यदि हम करते हैं इसके बारे में, तो मुझे लगता है कि यह जल्दी ही हम पहुंच पाएंगे और ये फर्टिलिटी रेट कम करेंगे। और टेक्नोलॉजी के जरिए इसको मॉनिटर भी किया जा सकता है, मंथली मीटिंग्स ली जा सकती है, ताकि हम टोटल फर्टिलिटी रेट और कम करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक है कि महिला का सशक्तिकरण हो। आज बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए
यह निर्णय वो महिला नहीं ले सकती है, यह निर्णय परिवार लेते हैं। सासू माँ बोलती है कि बच्चा चाहिए, फिर पति भी बोलता है कि बच्चा चाहिए। ऐसा ना होते हुए वह महिला तय करे कि उसे बच्चा चाहिए या नहीं। यह अधिकार हम जब तक माननीय नहीं महात्मा देंगे। जी, आपके बाद आपके पार्टी से 3 और स्पीकर्स हैं, तो अकॉर्डिंगली आप ठीक है, उसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का विकल्प हो और फ्री में मिले। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह जो आदरणीय मोदी जी का मंत्र है, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हम ये जो पॉपुलेशन रेगुलेशन में काफी आगे जाएंगे। अभी बताया गया कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को ध्यान में रख के किया गया लगता है, लेकिन ये मत समझिए ऐसा कुछ है नहीं। आप यदि कश्मीर का टोटल फर्टिलिटी रेट लेते हैं तो वह 1.6% है। वहां मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। तो ये इसलिए ये समझना अच्छी बात नहीं है कि यह एक समुदाय के लिए यह लाया गया है, ये पूरे देश के हित के लिए है। इसे इस तरीके से देखना चाहिए और उसमें एजुकेशन ये सबसे महत्वपूर्ण है और उसके लिए काम कर सकते हैं। तो ये हमने ये भी देखा कि इसी के लिए 1975 में बहुत यानी अत्याचार भी हुए थे। तो उस वक्त क्या उसका उद्देश्य कोई कम्युनिटी के लिए था क्या? नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि उसको इस नजरिया से ना देखा जाए। हम कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेकिन सबको पता है कि 100 कौरव से 5 पांडव ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके लिए यह जरूरी है कि हम ये समझ लें कि चिल्ड्रेन आर आवर रिसोर्सेज डेफिनेटली, लेकिन बहुत ज्यादा यदि पॉपुलेशन है तो क्या हम वो मैनुअल लेबर्स आज देखते हैं जो काम रोबोटिक्स या बाकी से हो सकता है, स्कैवेंजिंग आज आदमी लोग कर रहे हैं, तो ये सब लेबरर्स है। ये सब लोगों को हमको वो काम नहीं करने देना है, उनको भी एक डिग्निफाइड वे ऑफ लाइफ मिलना चाहिए। इसलिए हम ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बोल सकते हैं जब तक कि उनको हम स्किल्स नहीं दे पाते, शिक्षा नहीं दे पाते, स्वास्थ्य नहीं दे पाते। स्टंटेड ग्रोथ जो हो रही है 5 साल के लिए, वो पूरी तरह से हम बंद नहीं कर सकते, यानी स्टंटेड ग्रोथ ना हो इसके लिए उपाय योजना नहीं कर सकते। इसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं कह पाएंगे। और यह डेमोग्राफिक डिविडेंड तब होता है जब ये हम पूरा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। उसमें इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो ही डिविडेंड मिल सकता है। आज वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन यदि पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसका प्रमाण कम हो जाता है। यह डेमोग्राफिक डिजास्टर में ना बदले, इसलिए यह बिल लाया है और इसलिए मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करना चाहता हूं। सिर्फ मेरा ये कहना है कि ये स्वैच्छिक रहे और पूरी जानकारी के बाद रहे और महिलाओं को सबलीकरण के साथ में रहे। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय डॉक्टर एल हनुमंतैया जी। Deputy Chairman, sir. You have a speaker after you as well, so you keep. Sir, the bill, private member bill, brought by our friend Shri Rakesh Sinha ji, I hope it is with good intention, not with any ultimate motives of targeting any groups. I don't believe it because he will not do it. I believe that he will not. The reasons given in the bill, see, augmenting the availability, accessibility, affordability of quality reproductive health services and intersectoral development by the state government and central governments. This is one factor. The second factor will be, he is worried about the socio-economic disparities across population groups and religions and render equal opportunities to all irrespective of age, sex, religion, caste, class, race, residence, language, etc. to achieve the fullest development potential
for matters connected therewith and incidental thereto. This is the reason given to the bill. Sir, I just wanted to go one by one. See, with regard to food is the factor of this country, the study says food wastage, it is estimated 40% of the food produced in India is being wasted before it reaches the consumer. In other words, hunger is not lack of, it is because of lack of access to education, health care, and basic necessities do not appear due to the overpopulation. This is what the study says. Sir, if this is the fact, what is the action that we have to take up is the question. The question is, we have to take care of the education of all the sections of the country. That is number one. Sir, still the national average is 70% approximately. Another 30% is the uneducated class in the country, which forms about 35 to 40 crores. And those sections are living in rural areas, in tribal areas, in inaccessible areas of this country. We could not reach them educationally. Sir, this is the basic problem which we have to address, which is the necessity. Sir, in almost all, if I say it may be wrong, but in government school particularly, we lack of infrastructure. We don't give them basic necessity like toilet and water in most of the government schools, especially rural area. And the girls, which was already told by my colleagues, the girls' education standard is still below. That is because we have not given them the proper infrastructure like basic facilities like water and other things. Sir, this is a very, very important issue which we have to address today. Sir, regarding the health care and the basic necessities, sir, even today, our rural population has no access to hospitals during their deliveries. Lot of lady where they are going to be delivered in rural areas particularly are being subjected to death because they have no access even a nurse in the rural area. Honourable Member, you have one more speaker, so just keep that in mind. Yes, we have sir. only 2 minutes left. I'll still allow a couple of minutes. Okay, we will take care of it. Sir, the other important issue which I wanted to tell here, population growth can coincide with increasing abundance of natural resources and does not necessarily lead to scarcity. The concern is that despite birth rates declining dramatically across the world, sir, without getting any law in the whole world, the birth rate is dramatically declining. That is also to be taken note in this case. Sir, the other important issue which I wanted to bring it to the notice through you, sir, China has made an experiment. It is very correct that we have to compare with China because the population-wise we are almost similar. Honourable Member, please start concluding. And because you are already out of time for your party. Sir, I will request my party people to contribute their time to me. Your time for the entire party is over now. Oh, my then I will finish it in 2 minutes. Conclude, because you have one more speaker in the party. Yeah. Then I will finish it in 2 minutes. Sir, with regard to China, see the reduced productive as China's failed population policy, which is not affected the sex ratio, but reduced the productive workforce and resulted in an aging society. I request
Professor Sinha ji to look at this point, whether India today we are young India, which is going to be a burden to the whole society. That has to be taken care today itself. Sir, the last point which I wanted to make is, Mr. Sinha ji told one thing. The population control was told by many people, not one or two, a lot of people have told this. And he referred one thing, that is sovereign democracy. Sir, what is there in public domain? That I and you may not believe it. But what is there in the public domain? Sir, according to me, in the public domain, a community, a religion is targeted by the prachar of the people. I don't know who has made that. I think it is believed that some parivar has made this propaganda across the country. Please conclude. I have already given you half a second, I'll complete. Across the country, this propaganda has been made that a particular religion or a community is producing more, and that is why the population is going up. But it's totally false. That is why this is called Please conclude, saffron honorable member. I'll have to thinking. move on. Sir, just one sentence, I'll finish Please, it. This myth has to be broken. We should not believe this. From an august body like this must tell the country this kind of propaganda should be stopped, and this is not the fact. So I oppose this proposal of bringing a law into these kind of things. Otherwise, take action on so many socio-economic factors of the country and see that we are a healthy society and a healthy Bharat. Thank you, sir. Thank you. Dr. Fauzia Khanji. Thank you very much, Vice Chairman, sir. As I'm talking on the bill, I would like to first express what many of my colleagues have raised suspicion about, that there is some ulterior intention that is there behind bringing the bill. I'm sure it is not so, and my colleague has brought this bill with very clean intentions, because everyone agrees that population regulation is a very, very important issue, and I congratulate him for having brought this topic in the limelight. But at the same time, I must not disagree or blame my colleagues, because yes, there is an environment rampant everywhere, especially on social media, and the between the lines attitude of the government. This perception is there among the citizens of India, and it's a very sorry state of affairs. However, about this bill, I must say that the bill carries the potential to systematically alter India's social fabric itself, sir. If passed, the bill will render ordinary the otherwise extraordinary position of systemic exclusion. It will allow the government to stand aside and watch as the children and their parents die for lack of health care and protection. Sir, the proposed bill states that people with more than 2 children will receive fewer government benefits or services. This includes money, this includes limited benefits under the public distribution system, even for those at the bottom of the lowest strata, socio-economic strata of Indian society, sir. The bill privileges access to public education, healthcare facilities, and insurance to families with fewer than 2 children. In effect, the proposed text offers to perpetuate a long-standing anxiety around India's population growth, but takes on a particularly dangerous turn by attaching reproductive lives and children to direct exclusion from the polity. And this is certainly very dangerous, sir. Sir, as my colleague, Mr. Hanumantaya was just saying, that yes, everywhere in the world, population or the total birth rate is reducing. And as per data until August 2019, India had no contemporary
population explosion, sir. Instead, the trend has been in the opposite direction. Indian women had a total fertility rate of almost 6 in 1960, and the number has fallen to 2.2 by 2019. Sir, according to the 2018-19, the Economic Survey, Chapter 7, India's population grew 1.3% a year from 2011 to 2016, down from 2.5% a year from 1971 to 1981. The TFR was 2.2 in 2017, close to the replacement level fertility 2.1, sir. The survey estimated the TFR in 2021 to be 1.8. So it's a happy situation. It's not a worrisome situation, sir. And considering a demographic shift already occurred and is intensifying, the bill will only further marginalize the already marginalized, sir. For example, the idea of a population explosion, as many of my colleagues have expressed, lends credence to the country's already surging anti-Muslim sentiment. This, in turn, has been erected on false concerns that the population of Muslims in India is quickly outpacing that of Hindus. I think this is a lot of prachar made like this. This is fanned by communal statements by many prominent leaders, especially in election meetings, sir. However, the total fertility rate of Muslims is falling rapidly, as already stated about Kashmir, faster than it is among the Hindus. So this perception has to be created. This said, sir, the biggest victims of the bill will be Indian women in general of this generation, irrespective of any community, because many women already can't refuse to marriage, to reproduce, and are forced to undergo non-voluntary birth control measures. They are not at all considered, irrespective of their health conditions or whatever. They have to undergo pregnancy because beta chahiye. So that is why the Beti Bachao movement. Clause 8 of the bill is extremely problematic, sir. It says that no maternity or paternity facilities will be given to those who have more than 2 children. Not giving maternity benefits is very bad. Sir, even paternity benefits must be given. In fact, I have introduced a bill in this very parliament that even paternity bill should be given. People should be entitled. Fathers also should be entitled to be looking after their children at home. And we cannot allow the women to bear the brunt of decisions which they are not taking on their own. India has given us the freedom to make our own decisions. Unfortunately, our women cannot do that, and their pregnancies are forced upon them. So we cannot allow this to happen, sir. Female infanticide is also likely to worsen from the current skew of 909 female births per 1,000 male births. In effect, the bill will ensure the continued marginalization and erasure of women from public life, sir. We need, on the contrary, what we need is more expenditure on public health and not bills that punish people for crimes they do not commit. We must safeguard women's rights and contribute to a healthy population, sir. I agree with what my colleague Ami Yajnik just said, that, you cannot bring in things that you're punishing the entire population for your misgovernance, your own failure. Instead of population control bills, India should consider a population investment bill that takes the health, well-being and education of its citizens seriously. Sir, rather than forcing on the number of children, the bill should focus on the number of deliveries to cover twins, triplets, quadruplets, apart from normal deliveries. And as they have spoken about surrogacy and all that. Sir, I'll just conclude in 1 or 2 minutes. As per the National Family Health Survey of 2015-16, approximately 13 million women of reproductive age 15 to 49 in India
who want to avoid pregnancy are not using modern contraceptive methods. This is referred to as having an unmet need for family planning. On an average, Indian women wish to have 1.8 children on an average. This is otherwise known as desired or wanted fertility. However, they end up having 2.2 children on an average, sir. The most urgent task of the family planning program is to address unmet needs in India by expanding the range and reach of contraceptives, and especially the choices that women should be making, especially to the marginalized communities. So we have to reach to them, we have to spend on them, and we have to maximize the reach of available contraceptives, prioritize quality care and family planning counseling. We have to invest in training of healthcare providers and frontline workers, and Asha Didis, for example. Yes, sir. Asha Didis are the core of a village, and they need training on explaining to women the contraceptives that they should be choosing. Government should invest adequately in social and behavioral change communication for addressing barriers related to socio-cultural norms, fears, misconceptions related to contraceptive measures, sir. And at the end, I'll say, prioritize family planning and reproductive health services in emergency situations at all levels of service delivery. This is more important than punishing people who for no fault of their own. Thank you, sir. Thank you. Shri Mahesh Poddar ji. सर, पीएम ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब तब विश्व के हर मंच पे भारत के युवा आजादी के बारे में गर्व से चर्चा की है, और मैं समझता हूं कि उन्होंने ये तत्काल जो हमारा फायदा है, केवल अपनी सोच को उस तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उनकी दृष्टि भारत के भविष्य तक है, आगे आने वाली पीढ़ियों तक है। और वो सोच रहे हैं कि यदि हम कुछ कदम नहीं उठाए, और उन्होंने इसको जोड़ा है आबादी को संसाधनों के साथ, तो एक समय आएगा जबकि आबादी और संसाधनों का अनुपात बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, और वो उस समय जब हम जागेंगे तो हम पाएंगे कि हमने बहुत देरी कर दी, हमने पीढ़ियों की देरी कर दी। और इसलिए उन्होंने लाल किले के प्राचीर से देश का आह्वान किया, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने साथी राकेश जी को कि उन्होंने उनकी बात को आगे बढ़ाने के लिए आज ये बिल लेके आए हैं। और महोदय, 40 बार, ये कोई नई समस्या नहीं है, और न पहली बार, न कोई ऐसी बात भी नहीं है कि पहली बार या कोई इस संसद के सत्र में ही ये बातें उठी है। जैसा बताया गया कि 40 बार से अधिक इसके बारे में प्रयास हुए हैं, इसके बारे में चर्चाएं हुई है। और 1992 में एमएल फोतेदार जी ने भी एक बिल लाया था जो राज्यसभा में पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया। 1996 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने के करुणाकरन जी की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई थी। महोदय, इमरजेंसी के दौरान जो हुआ उसको मैं देखता हूं तो पर्सनली मैं उसकी भावना को गलत नहीं मानता हूं कि जनसंख्या में नियंत्रण तो सरकारों का दायित्व होना चाहिए, उसके लिए कदम उठा लिया। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई भी सभ्य व्यक्ति जिस तरीके से उसको लागू किया गया उससे सहमत नहीं हो सकता, और उसका परिणाम भी देश में देखा। और उसका परिणाम केवल उस सरकार ने नहीं देखा, उस समय के लोगों ने नहीं देखा। महोदय, मैं तो ये कहूंगा उसका परिणाम आज भी हम देख रहे हैं। आज भी इस विषय पे चर्चा करने में लोग संकोच कर रहे हैं। आज भी हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी, विशेषकर कांग्रेस के साथी, बार बार इसको एक धर्म के साथ में जोड़ रहे हैं। आवश्यकता नहीं धर्म के साथ जोड़ने की, वो भी हमारे साथ भारतीय है। यदि संसाधन हमारे हैं तो जितना हमारा है उतना उनका है। हम ये नहीं कहते कि उनको प्रथम अधिकार है या पीछे का अधिकार है, हमारे बराबर का अधिकार है। हम किसी भी मायने में बराबर हैं, हर मायने में बराबर है। तो अगर कोई समस्या है,
कोई सामाजिक समस्या है तो जितनी बड़ी समस्या हमारी है उतनी ही बड़ी समस्या उनकी भी है। वो भी देश का भला चाहते हैं, वो भी देश के संसाधनों का उचित बंटवारा चाहते हैं। महोदय, मोदी जी का आह्वान है सबका साथ सबका विश्वास। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह समस्या ऐसी है जिसको किसी एक समाज के वर्ग को अलग करके इस समस्या से हम निजात नहीं पा सकते या एक पॉजिटिव हम दिशा में नहीं जा सकते, क्योंकि इसको करने के लिए सबका साथ चाहिए और सबका विश्वास चाहिए। सबसे अधिक उनका विश्वास चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान में इसकी पीड़ा झेली थी। उनका विश्वास कैसे आएगा, ये मैं समझता हूं किसी कानून के द्वारा नहीं आएगा, किसी जबरदस्ती के द्वारा नहीं आएगा। एक आम सहमति की भावना जब बनेगी देश में और एक देश उन्नति के लिए सब एकजुट होंगे, एक मत होंगे, तब ये बातें आगे बढ़ेगी। महोदय, आज कल माननीय केशव राज जी झारखंड से संबंधित हैं, कल इन्होंने एक बात कही और ये बात कई प्लेटफॉर्म पे आजकल बहुत चर्चा का आ गई है। दक्षिण के हमारे राज्य और वेस्टर्न राज्य ये जॉब ज्यादा पैदा कर रहे हैं, बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, और झारखंड जैसे हमारे पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य है वो बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, जॉब कम पैदा कर रहे हैं। रिजल्ट ये है महोदय कि आज के दिन में मैं रांची में रहता हूं और बेंगलोर में भी रहता हूं, मेरे पास में अनेक केस ऐसे आते हैं कि लड़के लड़की शादी हो गई है और वर्षों तक लड़का बेंगलोर में जॉब कर रहा है, लड़की अकेले रांची में रह रही है और उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि दोनों साथ रह सके। या लड़की, कई बार ऐसा होता है लड़की को वहां जॉब मिल गया, लड़का यहां पे अकेला पड़ा हुआ है, वो साथ में रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। महोदय, यदि हम ये अपेक्षा करें और वो अपेक्षा करते हैं कि हम कर ज्यादा देते हैं तो हमें राज्यों का मतलब उसका शेयर ज्यादा मिलना चाहिए। मैं उनकी बात गलत नहीं कहता हूं, लेकिन मेरी बात भी गलत नहीं है यदि मैं अपेक्षा करता हूं कि हम लोग ज्यादा हैं तो हमें भी ज्यादा मिलना चाहिए। हमारी चिंता कौन करेगा? महोदय, ये एक छोटा सा उदाहरण है आबादी के एक कंट्रोल से बाहर जाने का, और उसके अनुरूप मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सरकार ने ये किया या वो सरकार ने वो किया, ये भी मैं नहीं कहता हूं। सारी सरकारों ने प्रयास किया कि देश में तरक्की हो, लेकिन तरक्की की रफ्तार यदि अपेक्षाओं की रफ्तार से पीछे छूट जाएगी तो असंतुलन होगा ही, और जो असंतुलन में राज्यों के बीच में देख रहा हूं महोदय, जमीन, जंगल, ये सारी चीजों की अपनी सीमाएं हैं, इन्हें हम कुछ पैदा नहीं कर सकते, लेकिन इसके बंटवारे के और हक और इसका उपयोग कौन कितना कर सकता है, ये एक चिंता का विषय है और एक हमें सोचना पड़ेगा। महोदय, अब हमारे साधन अगर कम है तो हमारा कसूर नहीं है। साधन बढ़ा नहीं सकते, प्रकृति को हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हाँ, प्रकृति ने एक हमें ईश्वरीय देन है आबादी, जिसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। और ये जो बहुत अच्छा नाम रखा है इन्होंने, पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल, पॉपुलेशन बंद करने के लिए, नसबंदी के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, बल्कि ये इसको रेगुलेट करने की बात कही गई है। और जो रेगुलेट करने का मतलब होता है कि एक समझबूझ करके इसको एक नियंत्रण में रखें। हमारे कांग्रेस के साथियों ने कहा और बार बार कहा मोटिव ऑफ द बिल, और कहीं ना कहीं पता नहीं हर चीज में इनको परिवार नजर आ जाता है। राकेश सिन्हा जी परिवार के साथ हो सकते हैं और परिवार के सदस्य हो सकते हैं, यदि उनका जिस परिवार से अर्थ है, तो मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष में जितने लोग बैठे हैं वो सब गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम उस परिवार के सदस्य हैं। लेकिन परिवार का अर्थ ये नहीं है कि हम देश को बनाना नहीं चाहते, बल्कि हम बार बार रिपीटेडली हर प्लेटफॉर्म पे खुलेआम कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए हम चिंता करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए हम जीते, राष्ट्र के लिए हम मरना चाहते हैं। ये बातें हम कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि जिस पीढ़ी ने आजादी के बाद में जन्म लिया वो तो आजादी के लिए नहीं मर पाए, लेकिन जिस पीढ़ी ने आजादी के बाद जन्म लिया वो आजादी के लिए कुछ काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद देश को आगे ले जाने के लिए, देश के भविष्य के लिए इस पीढ़ी पे दायित्व है कि आगे की सोचे और आगे की बात करे। महोदय, चाइना के बारे में बात किया गया।
चाइना सही है कि आज वहां पे पॉपुलेशन का उल्टा समस्या हो गया है कि चाइना की सरकार दुखी है, लेकिन इसके पीछे देखें आप, कितने वर्षों तक, करीब करीब 40-50 वर्षों तक उन्होंने वन फैमिली वन चिल्ड्रन पॉलिसी लगा के रखी। और उसके बाद में आज के दिन में जब उनके साधन बढ़ रहे हैं और जब चाइना आर्थिक रूप से इतना तेजी से बढ़ रहा है, जनसंख्या की समस्या उनके आड़े नहीं आ रही है। आज अब उनको महसूस हो रहा है वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब वो चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या कुछ और अधिक होती तो हम और अधिक तेजी से बढ़ते, और वो दूसरे लोगों को बसाने के लिए भी तैयार नहीं है। हम अपने देश की ओर देखें, हमारे पास में इतने लोग हैं और हम बड़े गर्व से करते हैं कि इतने लाख, इतने करोड़ लोग हमारे दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। यदि सूरीनाम में, मॉरिशस में बिहार का मटिया मजदूर गया था तो कोई चॉइस से नहीं गया था, उसकी मजबूरी थी इसलिए गया था। आज झारखंड का मजदूर जाकर के अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 30,000 और 18,000 फीट पे काम करता है तो ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको अपने घर में काम नहीं मिलता। महोदय, कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन जब जनसंख्या इतनी हो जाए और रोजगार कम हो जाए तो उसके पास में विकल्प नहीं होता। महोदय, जब हम इस बिल में हमने एक चीज बात कही है, इसको यदि मैं ये कहूं कि इट इज ए काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, कि हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि जो जिसकी आबादी ज्यादा और जिसके बच्चे अधिक हो उसको ये सजा दो, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये कर रहे हैं कि जिनके बच्चे कम हो उनको कुछ इंसेंटिव दो, उनको कुछ ऐसा फायदा दो जिससे कि और लोग भी प्रेरित हो सके। हम ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ आज के आंकड़े बोलते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है। एक्सप्लोजन का अर्थ ये होता है जहां विनाश हो। ये सही है कि हम विनाश नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके से बढ़ रहा है, और यदि हमारे साथी ये बोलते हैं कि उनको स्कूल दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, उनको ये दीजिए, और यदि हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो उस वृद्धि जो 2.8 या 2.2 या जो भी हो, उस वृद्धि के बारे में भी चिंता हमें करनी पड़ेगी। और ये तत्कालीन नहीं हो सकता, इसको लेकर के एक पीढ़ी, दो पीढ़ी। माननीय महेश जी, 2 वक्ता और हैं आपके दल से, और कुल उनके पास 9 मिनट बचे हैं 2 वक्ताओं के लिए, तो आप जी महोदय, जब हम मानते हैं कि यदि हमारे साथी मानते हैं कि जनसंख्या एक समस्या है, तो मैं समझता हूं इस बहस को विरोध ना करें, बल्कि इसको मजबूत करें, अपने सुझावों के द्वारा मजबूत करें। लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्टेबिलिटी कैसे हो सकती है उसके बारे में कुछ सुझाव दें। और मैं समझता हूं कि इस तरह के जो भड़काने वाली बातें हैं कि इस धर्म से और उस धर्म से, ऐसी बातें ना करें। मैं समझता हूं हमारे हर धर्म में, हर जगह उनके जो नेता हैं उनमें कुछ बुद्धि है, और वो अगर हमें उनसे सही तरीके से बातें पहुंचाएंगे तो उसको एक सकारात्मक रुख से वो देखेंगे। और ये बिल जो है, इट इज टू रिविटलाइज द एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रोमोटिंग द स्मॉल फैमिली नॉर्म अप टू 2 चिल्ड्रन पर एलिजिबल कपल। और मैं राकेश जी का धन्यवाद दूंगा, और मैं गर्व कर रहा हूं आज कि विश्व के अनेक देशों के खराब आंकड़ों के बाद भी इस देश में भारतीयता का एक उदाहरण, जो हमारी संस्कृति है, अनवेड मदर्स की संख्या हमारे यहाँ नगण्य है, और इसका कोई प्रमाण भी नहीं मिल रहा है, 1% भी नहीं है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन जब हम इतने गर्वान्वित हो सकते हैं इस उपलब्धि पे जो हमारी माताओं बहनों ने किया है, अपने आप को संयम में रखा है, परिवारों ने और युवक युवतियों ने अपने आप को संयम में रखा है, अपने भविष्य की जिम्मेवारी समझिए, बच्चे के भविष्य की जिम्मेवारी बनती है, तो ये जिम्मेवारी का एहसास उन लोगों को भी होना चाहिए जो बच्चे तो पैदा करते हैं किसी भी कारण से, जाने अनजाने में, लेकिन उनको अच्छा भविष्य नहीं दे पाते हैं। ये भी एक हमारी जानकारी होनी चाहिए और एक प्रयास होना चाहिए। महोदय, इस बिल में कहा गया है टू इंश्योर हेल्दी बर्थ स्पेसिंग। हेल्दी बर्थ स्पेसिंग, महोदय, हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने, जब हम 60-70 के जो लोग हैं, हम लोगों ने देखा है, और हर परिवार में हुआ है ये, कि बच्चे किस परिस्थितियों में पैदा हुए और चाइल्ड बर्थ का और चाइल्ड मोर्टेलिटी का क्या रेट था। हर परिवार में दुर्घटनाएं हुई है, लेकिन अब
जो जागरूक लोग हो गए हैं तो बर्थ के बीच में थोड़ा एक स्पेस भी बना है, उनके केयर की भी चिंता हुई है और ऑब्जेक्टिव में बताया गया है टू अचीव द फुलेस्ट डेवलपमेंटल पोटेंशियल एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विथ एंड इंसिडेंटल देयर टू। महोदय, ये एक बहुत नेक प्रयास है और नेक नियत के साथ में है और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ राकेश जी के लिए नहीं, हम सब के लिए, इस सदन के हर सदस्य के लिए आवश्यक है कि हम इसको एक नेक नजर से देखें, एक नेक इरादे से देखें, इसमें राजनीति और कोई उद्देश्य ढूंढने की कोशिश ना करें। महोदय, जब मैं देखता हूं कि इसमें कुछ पॉजिटिव उदाहरण हैं, फैसिलिटी टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु अडॉप्ट्स स्मॉल फैमिली नॉर्म, इस तरह की पॉजिटिव बातें कही गई है। हाँ, कुछ संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है और मैं समझता हूं ये सदन इसीलिए बना है कि यहाँ पे बहस करके सारे लोगों के विचार को समाहित करके हम एक निर्णय पे पहुंचे। एक पॉलिसी है कैरेट एंड स्टिक, हाँ थोड़ा बहुत दंडित या डिसइंसेंटिव का भी प्रोग्राम होना चाहिए, जिसका भी प्रावधान इस बिल में किया गया है। महोदय, कुल मिलाकर के तो मैं ये समझूंगा कि जहां तक इस बिल की चर्चा देश में होगी और होनी भी चाहिए, और मैं समझता हूं कि सारे लोगों को, सारे राजनीतिक दलों को किसी चश्मे से नहीं देख करके, राजनीति से ऊपर उठ करके देश के हित में इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा कि यदि ये कुछ निर्णय होता है और उसके बाद में निर्णय होता है और एक कदम भी हम आगे बढ़ते हैं तो यह एक लंबी यात्रा की दिशा में पहला कदम होगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय महेश जी। श्री अमर पटनायक जी, माननीय अमर पटनायक जी। Sir, in 2018, a petition came up before this Honorable Supreme Court by an Orissa resident. The candidate had filed his nomination to contest panchayat polls, but had been debarred. His application was rejected because he had 3 children. The rule is currently that with more than 2 children, he cannot run for posts in local government. This was pursuant to the 73rd Amendment of the Constitution 1992. There is another law in the Cooperative Societies Act, at that time the court observed, in Sion, which required that members could only have 2 children. So there have been laws like this at several places in patches to achieve the purpose of the sense of responsibility that the honourable member has introduced through this bill, that an over-explosion of population would render the resources insufficient to serve them, to serve those same very people, and also make the progress of the country as a whole for the rest of the people who are not producing also insufficient. Facing this, using this logic, one would have probably thought that the best way to achieve control of population is through legislative measures, through coercive measures. But history, not just in this country, but the world over, including in the United States, is witness to the fact that strong abortion population control laws have not worked. I will come to the data relating to the current situation in India, but I am going on the conceptual space. So the first, population
Conference of the United Nations was held in 1974. Karan Singh, India's health minister at that time, declared that development is the best contraceptive. I still feel that this particular logic holds good, that development is the best population control measure. But the question is, which people would say, that how do you achieve development when the population is growing? That is also a logic. Now we have seen that the biggest destruction to our environment, to our resources, natural resources, and it has been proved by economists, has not come from the number of the population. It has come from their behavioral pattern. We have to change that. It has come from industries. These industries, we are not closing industries. We are telling them, change your behavior, put in environmental control measures. Similarly here, the method has to be at the cognitive level, at the cultural level. It will be slow. We have achieved population replacement level of 2.1 in most of the southern states, including Orissa. Was there any control measure? Was there any regulation? It was only through development progress. So I would again be reminded of what Mahatma Gandhi said relating to the use of natural resources. The problem is not of human need. The problem is of human greed. So even if you have a small number of population, your greed can destroy the environment. Greed can destroy the resources. So I would again come to the fact that in the Finance Commission, in the 15th Finance Commission, like the 14th Finance Commission and the earlier commissions, population size criteria was taken as a criteria because the resources have to reach them. The argument and the criticism for this came from the southern states, including Orissa, that if you take 2011 census and not the 1971 census, then the states who have actually controlled the population through development are going to get less resources. My point is, if we have to consider that population control will come and should not be a criteria for deciding resource allocation, but people should understand its reducing impact if they grow more or if they produce more, then its criteria, its importance should not have been there at all. But the very fact, please conclude. Yes, sir. The very fact that we are recognizing that resources needs to go to population, higher population, to those states which are having more population, is an indirect admission of the fact that unless development reaches them, like what honorable members, other members have also said in health, education and various other aspects, they cannot reach, we cannot achieve what we desire. The intent is definitely not disputable, but the problem is, it is not through any kind of legislation. I will end, sir, by saying two things. Data suggests that the maximum number of children are being produced by the poor. They may belong to any religion. And that is purely for economic reasons. But the good thing about the current situation is when Niti Aayog says that the country's birth rate calculated as the number of annual births per 1,000 fell from 25.8 in 2000 to
to 20.4 in 2016, I would ascribe it to this development, to this growth. It is not by putting in any measures. There is also a misunderstanding that if you have a replacement level of 2.1, population will not grow. It is wrong. Population would still grow, but the Malthusian theory will not apply where it grows in geometric proportions than what you can actually provide for. There is also there is also a thought that these kind of measures are talked about by the rich on the poor. Let us get out of that kind of a debate. Thank you. I would such a last one second, sir. I would just quote. You have already taken more double time. Please conclude. I'll finish it. Others have to speak. I generally don't do, sir. So I'll finish. Adrian German, he was formerly of the Ford Foundation and a celebrity in international women's health and leads a coalition. She has said that there cannot be a top-down solution. The solution has to come from our women and from our men too. Thank you. And it has to be through Dr. cultural methods and not coercive methods. Thank you so much. Thank you. Sir, here my request is, here the proposed bill is the population regulation bill. Instead of bill, sir, here we should discuss the pathetic living standard of the majority of Indian child and how we can prevent the child death in our country. This is the major issue. Sir, in some of the region in our country, infant death is more than 200 in every 1,000 childbirth. Healthy and wealthy, educated citizens are the strength of our nation. But here, what we are seeing, sir, the education expenditure is our country. The expenditure is below 3% of GDP. Sir, the last year amount for education department is only 0.24%. Now the proposed amount is 0.22% for education department. Sir, the same kind of experience we are seeing in health sector also. Our respected health minister is here. The allotted amount of the last year for the health department is only 0.37% of GDP. Now in the government proposed amount, it is reduced to 0.17%. Sir, then the children in our nation, how the children in our nation will get proper health and education facilities? Sir, you please look the child care institutions like Anganwadis in our nation. Huge number of our Anganwadis are working in rental buildings. Sir, another group of Anganwadis are working without proper Paka buildings. So then they are working without proper space and buildings. So more than 90% Anganwadis are working in small buildings with 300 or 400 square feet. So government should change this kind of situation. Government should make the child care institutions as a garden of knowledge and enjoyment for the children. These words I am concluding. Thank you, sir. Thank you. Professor Manoj Kumar Jha ji. माननीय उपसभापति महोदय, हमारे कई वक्ताओं ने शुरू से ही राकेश भाई ने जब ये बिल लाया तो मोटिव की बड़ी बात की। अब राकेश भाई के साथ दिक्कत क्या है कि उनके पे ऊपर लागू होता है कि ज़ाहिर मोहब्बत से पहले बदनाम नजर हो जाती है, मैं दिल में इरादा करता हूं दुनिया को खबर हो जाती है। शुक्रिया सर। एक और चीज का जिक्र किया, सेफ्रॉन डेमोक्रेसी, हम में से किसी ने नहीं बोला। आज अगर पूरे सदन डेमोग्राफी, आज अगर पूरे सदन में कोई कहीं सेफ्रॉन है सर, तो उन्हीं की बंडी में और कहीं नहीं है। तीसरी चीज सर, अभी अमर भाई ने एक बात कही सर, 8वीं में बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक में हम लोग को इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस होता था, 8th या 9th में। क्यों नित्यानंद जी? 9th में हम लोग के समय में इकोनॉमिक्स का पेपर आता था।
नहीं सर, उस समय आपका भाव बहुत संभाव वाला था। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर कि उसमें जनगणना का एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन पे एक अध्याय होता था, और जो बात अभी अमर जी ने कही उसमें एक लाइन था, बाकी चीजें हिंदी में थी, लेकिन उस लाइन को अंग्रेजी में लिखा गया था कि डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। और अगर आप टीएफआर की स्थिति देखें अलग अलग राज्यों में तो आपको लगेगा कि ये मायने रखता है। माननीय उपसभापति महोदय, कई दफा इस तरह के बिल्स के साथ जो आशंका होती है ना, वो डॉग विसिल पॉलिटिक्स वाली होती है। और मैं जानता हूं राकेश भाई डॉग विसिल पॉलिटिक्स में बहुत पीछे हैं, ऊपर वाला ना करे कभी सक्सेसफुल हो, वो राजनीति उस राजनीति का लंबा आयाम नहीं होता। सो इन December 2020, in an affidavit filed in the Supreme Court, a petition seeking implementation of two-child norm, what the government of India stated, I wish to read. I quote, Government of India affidavit. International experience shows that any coercion, this bill is by nature coercive, any coercion to have a certain number of children is counterproductive and leads to demographic distortions. मैं नहीं कह रहा हूं सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यही सरकार कह रही है, 2020 में कह रही है। राकेश भाई, through you sir, honorable deputy chairman sir, most states have already reached a replacement total fertility rate, TFR. All my colleagues have spoken about it. Others are rapidly reaching that. So I think any coercive mechanism. तीसरी चीज है कि डेमोग्राफी को अगर आप देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज है माननीय उपसभापति महोदय, बीते कुछ वर्षों में एक अद्भुत चीज हमारे सार्वजनिक जीवन में हुई है। पॉलिटिशियंस ने बहुत सारे काम अपने जिम्मे ले लिए। इतिहास लेखन का काम इतिहासकारों का होता था, आजकल पॉलिटिशियंस ने वो काम भी ले लिया है, ना लिख पाए तो बदल डालें। और उसी तरह से पॉलिटिशियंस डेमोग्राफी का भी काम ले रहे हैं। अरे डेमोग्राफी इज ए वेरी सीरियस बिजनेस, इट शुड बी लेफ्ट टू डेमोग्राफर्स। And we have no dearth of great demographers in this country who have contributed immensely and who have provided an insight, a direction that through which our family. एक चीज और होती है, इससे पहले जब पॉपुलेशन कंट्रोल का एक और निजाम को ये ख्याल आया था, सर जब बहुमत बड़ा होता है ना तो इंसान के अंदर कई सपने आते हैं। तो एक वक्त 75 में उधर आया था और अब इधर आ रहा है, लेकिन ये सपने डरावने सपने में तब्दील हो जाते हैं। मतलब कभी भी किसी निजाम को ये तय करना चाहिए कि दायरा लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन का कहां होना चाहिए और कहां नहीं होना चाहिए। सर अभी जो तत्कालीन आबादी के हिसाब से देखें, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं 79.8% हिंदूज, 14.2% मुस्लिम्स, 2.3% क्रिश्चियंस एंड 1.7% सिख्स एंड रेस्ट अदर्स। हमें तो यह भी जानना जरूरी है कि हिंदुओं के अंदर इस आबादी में, जब आज मैं यहां बोल रहा हूं राकेश भाई, तो सैनिटेशन में एक डेथ हो चुकी होगी सीवर में उतर करके, उसकी भी जाति है, वो भी हिंदू है। हमारे तौर तरीकों में, हमारी प्राथमिकताओं में ये चीजें क्यों नहीं आती हैं माननीय उपसभापति महोदय? बस मैं एक दो और चीज करके, और खास करके जो हमारे पेट्रियार्कल समाज का जो एक स्ट्रक्चर जो हमारा है, इसमें सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या की संभावना और बढ़ेगी। आप रोक नहीं पाएंगे। आपके कानून के हिसाब से बोर्ड लगा दिया जाता है नर्सिंग होम में कि यहां भ्रूण जांच नहीं होती है, सबसे ज्यादा जांच वहीं होती है। हमें पता है ना कि हम जब कानून बनाते हैं तो उसमें लूप होल्स कौन लोग ढूंढते हैं, ये सनद रहे सर। और कोई ऐसा कानून तो कतई ना हो जो विमेन को फर्दर विक्टिमाइज करे। इसमें सबसे ज्यादा विक्टिमाइजेशन की संभावना विमेन की है सर। ये असल में राकेश भाई का दोष नहीं है, ये नियो माल्थसियन आर्ग्यूमेंट भी है। ये जो रिसोर्स का और पॉपुलेशन का एक बाइनरी टाइप रिश्ता बनाते हैं, ऐसा है नहीं, बड़ा संश्लिष्ट चरित्र है, उसको समझना जरूरी है। जो मैंने पहले एक बात कही थी, आप उन राज्यों की सूची देखें, टीएफआर उनका लेवल देखें, वो कैसे संभव हुआ। डेवलपमेंट इनपुट गए। अभी महेश भाई बता रहे थे, झारखंड का आदमी, बिहार के लोग तो कई बार लोग हंसी में कहते हैं सर कि नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पे गए थे ना
तो वहां उनको चाय पिलाई थी बिहार वाले ने, पहले से था वहां खोमचा लगा करके। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी स्थिति ये क्यों है, झारखंड की स्थिति क्यों है। मैं केरल तमिलनाडु के आपत्ति से भी वाकिफ हूं, लेकिन सर ये एक दिन में नहीं हुआ है। 70 वर्षों में हर सरकार ने वहीं इन्वेस्ट किया जहां पहले हरियाली थी, वहां इन्वेस्ट नहीं किया जहां हरियाली होनी चाहिए थी। तो वो नीतियां बदलिए, ये सारी चीजें आपकी खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगी। अब सर एक मैं डेटा देना चाहता हूं। आई रिपीट, द कंट्रीज हेल्थ केयर बजट सॉ अ 10% डिक्लाइन फ्रॉम रिवाइज्ड एस्टिमेट of 2021. There was a 6% cut in allocation for education, while the budgetary allocation for social security schemes declined from 1.5% to 0.6%. और तब हम बात करेंगे कि कैसे डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव काम नहीं कर रहा है। आखिरी चीज सर, we must realize that women would bear the brunt of a two-family norm. The use of condoms declined by 52%. And vasectomies fell by 73%, showing the reluctance among men to engage with birth control. एक 30 सेकंड की टिप्पणी करके सर, वेस्ट बंगाल का लेसन मैं देना चाहता था। Interestingly, lessons could be learned from West Bengal. In West Bengal, the figures for women with 10 or more years of schooling, 32.9%, and women marrying before age 18 years, 41.6%, are almost similar to Bihar and even worse than Uttar Pradesh. But it seems that the West Bengal reached the TFR of 1.6%. Why? Because of decline in neonatal death. अब मैं समझता हूं सर इन तरह की चीजों पर हमारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए। और आखिरी टिप्पणी करूंगा, मैं शुभकामनाएं देता हूं सर मूवर ऑफ द बिल को, लेकिन इस तरह के मसलों पर एक समय की तरह हो। इस देश की प्राथमिकताओं की लिस्ट में ये बहुत पीछे आता है। राकेश जी, फिर किसी को बड़ा बहुमत आएगा और इसी तरह की लो हैंगिंग फ्रूट को पकड़ने की कोशिश होगी। लो हैंगिंग फ्रूट जहरीले होते हैं सर। जय हिंद सर। धन्यवाद। माननीय विनय विश्वम जी। माननीय विनय विश्वम जी। Yes, sir, I'm here. Sir, taking into account the time factor, I keep apart these figures of the TFR and the affidavit of the government and such matters. Sir, my friend Rakesh is a good friend of mine, but I never thought that he is so cruel to the people. So cruel to the people. Yes, your friends did. Wearing a saffron coat, he came to this house and delivering a reason why this country is poor. This country is still a country with greatness, but with poor people. A rich country with poor people. We know everything. The global hunger index, we start 101 position. The death of anemic women, we are number 1. The death of children below 5, we are number 1. So many number 1 we are having. It's a common concern. We communists are concerned. You are concerned. The Congress is concerned. No doubt. What is the reason? The reason is the poverty of this country. Just don't everybody. But my friend has found the reason. The people are the enemies. So what to do? Punish them. See that they are not even born. This is the approach of this bill. So look at the section 7 of that bill. It said punitive measures, one after another coming. One after another. No time to read all those things. No ration even. No jobs, no increment, no subsidies. Manya Vinay Vishwamji, you can continue your speech when this discussion resumes. We have some special mentions. Then at 3 we have to. So you can continue when we next meet on this subject. Thank you, sir. Thank you. Now this is special mentions. Ms. Dola Sen. Just you have to read the title only. Shri Sushil Kumar Modi ji. Dola Sen ji absent. Shri Sushil Kumar Modi ji absent. Shri Rajmani Patel ji. हाँ सिर्फ आप टाइटल पढ़ दें. टाइटल पढ़ दो. डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ विंध्य प्रदेश. ले कर दीजिए.
माननीय सभापति 2 मिनट का है। नो अब खत्म होगा 3 बजे हमको। माननीय सभापति जी, पृथक बिंद प्रदेश को बनाने के बाबत मैं ये सदन पर रखता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। माननीय श्री केसी राममूर्ति जी, नॉट प्रेजेंट। श्री वी विजय साई रेड्डी जी, नॉट प्रेजेंट। श्री एलामरम करीम जी, प्लीज read the title. Transports free of cost of the Shaheen tropical cyclone victims in Muscat. Thank you. Dr. Fauzia Khan ji, just read the title. Time is already there. सर, मी मराठवाडा विभागामध्ये रेल्वेच्या सुविधांमध्ये वाढ करण्यासंबंधी विशेष उल्लेख सदनाच्या पटलावर ठेवते. Thank you, Dr. The House stands adjourned to meet at 10 hours on Monday, the 7th February 2022.